साले तूने वीडियो ऑन की। रुक मैं भी ऑन करता है, गलती से। मैं भी ऑन करता है, रुक। आता है क्या वीडियो? अरे इसमें चालू है ना, इसलिए नहीं आएगा। रुक अबे वो देख, मैंने स्क्रीन शेयर किया। रुक, एक सेकंड एक सेकंड। हाँ देख रहा हूँ। 403 महंगा है बेंच, नहीं 304। किधर है? ऊपर जाओ, ऊपर 304 जाओ। महंगा है भाई। यही है तेरा, ये महंगा है और ये सस्ता है बेंच। $29, 3000 का है। और 304, हाँ 305 देख रहा है तो वो 304 नहीं है। मैं जो दिखा रहा था ये रहा, लॉजिटेक 304। वो 305 है बे। 305 है ये बेंच। हाँ 304 चाहिए ना। ये 305 हीरो है। ये हीरो है, हीरो कॉस्टली है बहुत। नहीं हीरो ये नहीं है। हीरो है बे, हीरो 12K सेंसर। हाँ है, ये लिखा हुआ है। तो 304 नहीं मिल रहा मादरचोद। देख देख, वायरलेस होगा ना। नीचे जो 703 है, 303 है। हाँ नहीं है। हाँ, 304। 305। 305 ये 30। 3000 का मिल रहा है बेंच। हाँ वही। क्या? नीचे जाओ। अरे ब्लू क्यों? ये हैं? ये ब्लैक वाला ज्यादा कॉस्टली है। हाँ वो कलर की वजह से होगा, पर ये 404 वाला। और 30। 304 नहीं है। नहीं नहीं, नीचे जा नीचे जा। हाँ यहाँ पे नहीं होगा, पर ये क्या है? तेरे को ब्लैक वाला विथ माउस पैड 49 पाउंड्स का मिल रहा है, और सिर्फ ब्लैक वाला भी 49 पाउंड्स में मिल रहा है। हम्म। क्या फायदा? क्या? कौन खरीदेगा ब्लैक वाला सिर्फ फिर? क्यों रखा है खाली उसको? एक बे, अपन ऑन करते हैं ना। ब्रो रेजर का ज्यादा सस्ता है। क्या बात कर रहा बट है? वायर्ड, ये देख डेथ एडर लिटरली 3000 का, ये भी 3000 का है ये। तू देख रहा है मेरा कैमरा? हाँ कैमरा हाँ। ये देख, ये है मेरा माउस। भाई इतना कॉम्पैक्ट है ना यार। और हल्का भी है ना। हल्का है, हल्का है, प्लस प्लस इसका सबसे बेस्ट फीचर मेरे को यही लगता है कि मैं इसके अंदर डाल सकता हूँ, तो मेरा कभी भी रिसीवर ना होए। नहीं तो बाकी भाई पर जितने। बैटरी चाहिए होगी इसके लिए, मैं बैटरी कहाँ से लाता रहूंगा। भाई रिचार्जेबल बैटरीज करके भी कुछ चीज होती है, मैं तो वही यूज करता हूँ। तेरी रिचार्जेबल बैटरी है। हाँ, मैं दो बैटरीज रखी हैं। एक खत्म हो जाती है, मैं दूसरा डालता हूँ, दूसरे वाले को चार्ज पे डाल देता हूँ। पर भैंसो मेहनत है और भाई ये और रिचार्जेबल इसका बैटरी। इसका इसका बैटरी रहता है पता है कितना दिन? आराम से 2 महीना एक चार्ज पे चला जाता है। भाई पर ये बेटर माउस है ना ये वाला, तो G502। होगा भी, पर मैं क्या करूंगा 25,600 DPI का। भाई जो 3000 में मिल रहा है मेरे को, मैं सोच रहा हूँ मैं ये क्यों नहीं ले लेता अभी। भाई तो वो भी तो देख यार, उसका फॉर्म फैक्टर कैसा है। वो पता है मेरे को सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है इस माउस की? इसके जो ये है ना, माउस 1 और माउस 2, ये एक्सटेंडेड है, तो जो भी ये चीज है ना, तो उसके अंदर चला जाता है धूल, डस्ट वस्ट। और कभी तेरे को तो मालूम है मैं कैसा हूँ, ये मेरे हाथ में नहीं रहने वाला। ये रहा G403 हीरो है बेंचो। जी 403 है वो, 304 नहीं।
303 श्राउड एडिशन। और महंगा हो चुका है। भाई तू सर्च कर रहा है क्या नया माउस? हमेशा से, पर भैंचो क्या ही करूँगा जब तक के पैसे नहीं कमा रहा। हाँ, बात भी सही है। ये सरकार कीक्रॉन लेने का मैं सोच रहा था भाई, कीक्रॉन कितना प्यारा है भाई। भाई कीट्रॉन में प्रॉब्लम है पर नहीं आएगा ब्रो, उसका नहीं चल रहा होगा। क्या क्या प्रॉब्लम है? कॉस्टली है और क्या प्रॉब्लम होगा? 10,000 का है। वही तो दिक्कत है भैंचो, हट बे। अरे रैम तो मैं लेने की सोच ही रहा हूँ, रैम 8 GB और एक्सटेंड कर देना चाहिए मेरे को। रुक, तो 8 GB ले रहा है ना? लैपटॉप वाला देख, ये पीसी डेस्कटॉप वाला है। लैपटॉप वाला ही नहीं, हाँ ये ये लैपटॉप वाला लैपटॉप वाले 20। हैं। हाँ तो 2000 का मिल रहा है, मैं सोच रहा हूँ ये ले लेता हूँ। सुन 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 सुन, तेरे को मालूम है तेरा कितने मेगाहर्ट्ज का क्लॉक स्पीड तेरा रैम का एक्चुअल? और कौन सा DDR3 है DDR4 है? DDR4 है। कंट्रोल शिफ्ट एस्केप दबा तो इंस्टॉल्ड रैम 8 GB है, रैम का डिटेल्स नहीं है। नहीं नहीं, कंट्रोल शिफ्ट एस्केप दबा, परफॉर्मेंस पे जा, परफॉर्मेंस पे जा, मेमोरी पे जा। कितना है तेरा? 266 2667 मेगाहर्ट्ज। स्लॉट्स यूज्ड 1 ऑफ 2। हाँ, तो तेरे पास एक तो अपग्रेडेबल का है प्लस। नहीं जो 7.8 GB यूज है नहीं अवेलेबल है, उसमें से हाँ, कितना यूज है? 5.4। नहीं नहीं, रैम का तो उतना ही रहता है। इसका भी कितना होगा? इसका कितना है? हाँ तो कितना या टू फिफ्टीन नाइन पॉइंट टू नाइन सिक्स है सेवन है ना, तो यही यही वाला तो है। टू हाँ सिक्स सिक्स हाँ, ये वाला है। नहीं, ये नहीं है, 32 मेगाहर्ट्ज भाई, का है ये। ये तो और टू नाइन क्लियर, थ्री थ्री और 266। ये तो क्लियर भी नहीं बताया। ये तो लिखा क्लियरली तो हुआ बता। है। अबे 32 मेगाहर्ट्ज का बोल रहा है, पर हो सकता है 2933 और 2666। इसका क्या मतलब होता है? या फिर तो है या फिर नहीं है। और का मतलब क्या होता है? अरे ऑप्शन होगा, ऐसा कुछ होगा। ऑप्शन तो दे नहीं रहा ना, वही तो प्रॉब्लम है। स्टाइल नेम, हाँ स्टाइल नेम 32 मेगाहर्ट्ज ही है, 2660 नहीं है। वही प्रॉब्लम होता है बे लैपटॉप्स में, कि लैपटॉप्स में लोअर क्लॉक स्पीड का रैम आदत छोड़। लिखा हुआ है। पर डाउन क्लॉक कैसे करते हैं? वो तेरे को बूट में जाना पड़ेगा, बूट तो ये हो सेटिंग्स में। जाएगा? मेरे को मालूम नहीं, क्योंकि डिफरेंट बूट, डिफरेंट मदरबोर्ड्स का डिफरेंट बूट सेटिंग्स होता है। कुछ मदरबोर्ड्स अलाउ करती हैं, कुछ मदरबोर्ड्स नहीं करती हैं। ये तो मदरबोर्ड का काम है, डाउन ये क्लॉकिंग। रहा, और ये ज्यादा महंगा है। ये ज्यादा महंगा है। ये DDR4 26। तो एक काम करना तू, तो 16 GB का पैक देख, तेरे को शायद से सस्ता में मिल सकता है। एक सेकेंड, तो एक काम करना, पार्वे तू आ रहा है ना? तू कब आ रहा है इधर? हाँ समर में आ रहा हूँ। समर में आ रहा है ना, तो तू वेट कर ले, क्योंकि अभी रिपब्लिक डे सेल चल रहा है। तू यू इंडिया के साइड पे जा। 2 मिनट, ये सही वाला वो है आई थिंक। ये सही है, पर तू रिपब्लिक सेल चल रही है ना इंडिया में, रिपब्लिक डे से। इंडिया में तो अभी हाँ इंडिया में तो ले ही सकते हैं। हाँ, तो इंडिया में ले ले, इंडिया में सस्ता पड़ेगा, रिपब्लिक डे सेल चल रहा है। तो तेरे को बस 2 महीना वेट करना पड़ेगा शायद से। ये भी सस्ता है, 22 का है। नहीं नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ तू डायरेक्ट 16 GB का 32 मेगाहर्ट्ज का पूरा पैक ले ले। क्यों लूंगा 32 मेगाहर्ट्ज का पर? तेरे को सेम प्राइस में मिल जाएगा ना, अच्छा क्लॉक स्पीड सेम मिलेगा।
हाँ तो पर तू, मेरे को तो 32 मेगाहर्ट्ज की जरूरत ही नहीं है ना। मैं बोल रहा हूँ अगर तेरे को सेम प्राइस में जो तू अपग्रेड करने के लिए दे रहा है, उसी में तेरे को अगर अपग्रेडेड वर्जन मिल रहा है 16 GB डुअल रैम, तो तू क्यों नहीं लेगा वो? मेमोरी, लैपटॉप, डुअल 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 सिक्स डुअल 8 GB। ये सिंगल 16 GB है, डुअल 8 GB ले। तो ये भी सस्ता है बेंचो ना। नहीं थोड़ा, कितना सस्ता, ज्यादा सस्ता नहीं है। आ, पता नहीं तू डुअल क्यों बोल रहा है, मेरे को नहीं समझ में आया। डुअल मतलब दो 8 GB के रैम्स होंगे 16 GB के लिए। डुअल ज्यादा हाँ पर, बेटर है देन वन सिंगल 16 GB स्टिक। अरे पर मेरे पास ऑलरेडी 8 अभी प्लग्ड इन है। हाँ वही बोल रहा हूँ ना, तेरा जो 8 और मेरे प्लग्ड पास इन है, एक स्लॉट बचा हुआ है, तो मैं 2 और क्यों लूंगा। तो तू जो 8 है वो निकाल के तू 3200 के दो डाल सकता है। वो बोल रहा हूँ। अगर तेरे को, वही बोल रहा हूँ ना, अगर तेरे को एक 8 GB का वो मिल रहा है, ठीक है, और तेरे को उसी प्राइस में दो 8 GB के मिल रहे हैं, तो तू दो 8 GB लेगा बेटर क्लॉक स्पीड के साथ, और जो एग्जिस्टिंग है उसको रिप्लेस करके ये डाल देगा। सिंपल। अच्छा तो मतलब मेरा बायोस बेटर क्लॉक स्पीड सपोर्ट कर सकता है, ऐसा बोल रहा है तू। हाँ कर सकता होगा शायद से, वो भी देखना पड़ेगा। शिट, वो देखना तो भूल ही गया। गेमिंग इंटर, मदरबोर्ड क्या बोलते हैं, आई इन कोर i5 9 जेन है, तो मदरबोर्ड कैसे देखते हैं। ओ एस्पायर मदरबोर्ड तो आई थिंक बस सेटिंग से ही आई पता चल जाना फाइव चाहिए ना। 9th gen है ना? हाँ, ओके, यहीं से 9th। पता चल जाना चाहिए ना मदरबोर्ड तो। रैम, हाँ। इसमें मदरबोर्ड नहीं दिया होगा मोस्ट लाइकली। एक सेकेंड। नहीं ब्रो, डुअल में तो नहीं, डुअल तो नहीं मिलेगा उतना सस्ता। देख, है ही नहीं डुअल। हम्म, हम्म, ये मेरा जो प्यार का दिन। डुअल चैनल हाँ, बोल रहा है या तेरा दो बोल रहा टर्बो है तू। बूस्ट है 4.1 तक का। डुअल चैनल है, डुअल 8 GB स्टिक्स, दो 8 GB स्टिक्स। जैसे 1 into 16 GB दिखा रहा है ना तेरे को, आई डोंट, वैसे वहां पे 2 into 8 GB दिखाएगा। समझ गया, मैं समझ गया। या अरे बहनचोद, क्योंकि हम सर्च ही 16 GB कर रहे हैं, चूतिया ना मैं। 8 GB, हाँ देख 16। हाँ ये तो भाई, ये तो 16 में मिल रहा है भाई इंडिया में, ये क्या मजाक है। नीचे देख, और भी सस्ता है। हाँ तो तेरे को एक तो मिल रहा है यार, मतलब एक मिल रहा है तेरे को 1600 में, तो तू 1600 में इंडिया में खरीद सकता है। या मैं इंडिया में ही खरीदूंगा। हम्म, और क्या अपग्रेड करना था तेरे को? रैम? और तो कुछ नहीं। ओह, भाई लीड कोड, ग्रुप एनाग्राम। ये वही वाला है जो तूने मेरे को हम्म, चीटिंग करके बताया था। ओ ये वही वाला है जो सेट करके किया था ना? यस। हम्म, हम्म। अरे अपना भी एक, अरे तू फॉलो कर रहा है क्या क्या? एंड्रयू ट्रेड का, जो भी चल रहा है, जो कुछ भी? नहीं तेरे को मालूम भी है क्या नहीं, हुआ है? क्या करना है वैसे अपन को, ये तो बता। क्या करना है? तो हाँ, तू बता क्या करना है। तेरे को एक चीज दिखाऊं बढ़िया से? पहले स्ट्रीम तो ऑन कर, फिर उसके स्ट्रीम बाद क्या ऑन ही करना है है बता। भाई।
स्ट्रीम ऑन है तब What से। the fuck? हाँ एक- अपने अपन तो क्या वीडियोस देखने वाले थे ना? हाँ तू तू बता, तू ही तो बता रहा था कि तू दिखाने वाला है, क्या बोलते हैं, टर्मा बट का कुछ तो। क्या वीडियोस देखना है बता। मेरे निशांत सूरी का कुछ नया आया है वो देखना है? चल लगा। Doing podcast or what? पता नहीं. Most probably not. Your money personality. Okay. Check कर जा on YouTube पे. रुक। कैसे? How are you going to do this? You'll have to screen share. Then मैं I'll स्क्रीन शेयर watch करता along हूँ। with you. हम्म, आजा। भेज। Uh, uh, go on his channel ना. किस पे चैनल पे जाऊँ? 720p. Yes. Oh निशान yeah, सूर्य। you can like yeah. The streaming quality should have like improved, is it? Something. क्या बोल रहा है? Because I did that. I boosted now. I think I think it's 32 kbps. Anyways, go तेरे to को दिखना YouTube, है। Nishant Suri. You should be able to see, right? I don't think anyone else would be able to like do. Let me try. Uh, wait. Why is uh, stupid? let me try. Arey, share. No, you Okay. can't. I need to have Nitro to stream like 720 60. Uh, Ishan Suri, right? Ishan Suri. yeah. So his new show, right? That one. Gedi show. Stand-up comedy, Bolt and the Gady show. So whatever you want to see, from first to episode or second episode. You'll have to share application. चालू नहीं है क्या? I don't think so. Bro, what you're already running a game, stupid. एक second, रुक। It's Genshin, isn't it? Is that Genshin? Yes, जशन खेल रहा था बैकग्राउंड में। किधर है? अरे fuck, मैं यार डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ बार बार। Chaman. मैं चूतिया चमन चूतिया। Oh my god. किधर है? Oh ये my रहा। god. ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। दिख रहा है तेरे को? आवाज आ रही है? Yeah. एक सेकंड। Sorry. Hey, we should just watch you. Um, like this is like I really like the concept of this video and what he's trying to do, but I think it's still quite rough, and he'll polish it as he iterates more on this. पर So क्या it's है? also 20 Like minutes give long me the video. like download TLDR. Give me TLDR. He's just filming. He's just logging, and it's like a travel food and travel show, like how MTV used to run them back in the day, and it's just on YouTube, and it's really nice, and it's his flavor to it. Except
there's like subtleties in it where like I don't know which places he's eating from and stuff like that. So he's still not good enough. He's not like Hmm. it's not the best. Do But you watch like तेरे को पूरा देखना है like it's 20 minutes long. अरे या फिर तन्मय भट्ट का अरे कुछ देखना है. हम 1.75 पे करके देखेंगे भाई। हाँ ये सही बात है. करो. But why you just हाँ, lose the thing? नहीं नहीं, But fair. okay, I kind of get the vibe now. It's like that slapstick comedy with like a travel vlog kind of thing, right? Bro, how is Not this slapstick? not It's not slapstick, like slapstick. it's not slapstick, like कुछ kind भी of बोल like an रहा है. office vibe. ठीक Just है. अबे slapstick नहीं, office vibe, kind of the Yeah, office vibe, exactly. but as Office a vibe. travel Yeah. vlog. Yeah, got it, got it. Like मतलब माइकल साइड से आके मतलब दो वन लाइनर दे देगा ऐसा। Slapstick बोल हाँ, रहा हूँ स्लैपस्टिक पहले. नहीं यार, तू चुप रहे, ठीक है। गान मारा। ये तो सही बोल रहा है बे। मैं यहाँ पे भी देख रहा हूँ कि मैं जो 4 में से 7 लोगों के पास थार है। मतलब यहाँ, कहाँ पे देख रहा अबे था? वडोदरा में भैंचो, मैं घर से निकलता हूँ, गली से निकलता हूँ, 3 थार मेरे को सामने मिलती है। जो मैं निकलता नहीं हूँ, तेरे को मालूम है मैं कितना कम निकलता हूँ घर से, पर जब भी निकलता हूँ मेरे को 3 थार सामने दिखती है हमेशा। तो कहीं ना कहीं से तो आ ही जाती है बे थार। माँ कसम यार, ये क्या मतलब इतना क्या प्यार हो गया है इस गाड़ी से। और एक तो ये वाला थार तो फिर भी समझ आता है, ये काइंड ऑफ लाइक वो है। ये वाला थार क्या है, थार दूसरा वाला थार इधर है, ये आ, ये वाला नहीं बे, ये ऑटो पे नहीं। अबे ये जो थार है इसका एक वेरिएंट है जो एसयूवी टाइप वेरिएंट है, मेरे को मालूम नहीं क्या है भाई। इतना इतना मतलब इरिटेटिंग है ना वो। भैं जो सामने, एक तो उसका मुंह इतना बड़ा है, पीछे से उसका डिक्की का साइज इतना बड़ा है। तो भैं जो स्कूटी जब मैं घुमा, ये टर्न लेते हैं ना, मैं स्कूटी नहीं घुमा पाता क्योंकि कहाँ से घुमाऊं। साइड से जाऊंगा तो इसका मुंह है, पीछे से जाऊंगा तो इसका बैक है, कुछ कर ही नहीं पाता मैं। ये इतना इरिटेटिंग है ना ये जो थार ड्राइवर्स। एक तो ये जो थार वाले लोग हैं, इस सड़क अपने बाप की समझ के चलाते हैं। मुझे इतना मतलब फ्रस्ट्रेटिंग लगता है यार जब मैं स्कूटी निकालता हूँ। एक तो मैं स्कूटी निकालता भी मतलब 3 महीने में एक बार हूँ यार, मेरे को जाने दो यार एक अच्छे से। ऊपर से ये ओवरब्रिज जब से बना है ना, तू तो आया नहीं है, तेरे को मालूम नहीं है, तू वडोदरा में आया भी नहीं है, तू आएगा भी नहीं। एक ओवरब्रिज बन चुका है भाई, कहाँ से कहाँ तक, ये अपना वो है ना, ट्राइडेंट मालूम है ना तेरे को, ट्राइडेंट। ट्राइडेंट से अपना ट्राइडेंट से तेरे को मेरे को याद नहीं, तेरे को मालूम है कि नहीं, ये कलाली तक, कलाली याद है ना जगह। हेलो, हाँ, ट्राइडेंट बोल से बोल. कलाली तक एक ओवरब्रिज बना दिया है। उस ओवरब्रिज में सारे के सारे नल्ले लोग पता नहीं क्या पी पा के, एक तो ड्राई स्टेट है, पता नहीं क्या पीते हैं भाई, चलने नहीं देते। मैं आराम से स्कूटी चला रहा हूँ, तीन तीन लौंडे एक बाइक पे पैर रख के जा रहे हैं। मतलब
कौन कैसे कोई ओवरटेक भी नहीं कर सकता उनको, अब क्या करें। हॉर्न मारते तो जगह भी नहीं देते, अब वहां से जा नहीं सकता, वहां से वन वे मतलब एक रोड डिवाइडर है अंदर, 3 लोग एक बाइक पे पैर रख के जा रहे हैं, पूरा रोड ब्लॉक करके रखे हैं। ऊपर से नीचे से जा भी नहीं सकता, क्योंकि नीचे जाने के लिए मेरे को पीछे जाना पड़ेगा वापस। इतना फ्रस्ट्रेटिंग हो गया ना यहाँ पे ड्राइव करना, मैं एक ही बार गया हूँ, मैं उसके बाद से बाहर नहीं निकला हूँ। Lol. Fair enough. Lol. आई लाइक द वाइब्स तो, Yeah, it's not bad. आई कैन अंडरस्टैंड वेयर इज कमिंग फ्रॉम, बट मैं बता रहा हूँ कि ये जो फॉर्मेट है बहुत आउटडेटेड है, इसलिए मतलब इतना मजा नहीं आ रहा। नहीं, I think the format's amazing. फॉर्मेट अमेजिंग है, बट ये जो तरीके से प्रेजेंट कर रहा है वो आउटडेटेड है भाई। इस टाइम पे हमको ये सब नहीं चाहिए, इस टाइम पे हमको पता है कैसा चाहिए, यू गिव अस अ स्नीक पीक कि कुछ इंटरेस्टिंग हुआ है, ठीक है, फिर हम देखेंगे कि हमको जाना है कि नहीं। पहले 30 सेकंड में मेरे को बता दे कि ये होने वाला है, पर पूरा स्टफ मत बता, Yeah, ऐसा I don't आधा think so. आधा, आधा करके बता। I think this was pretty nice. I think this is very much very different from what like normal general vlogs. ऑफ कोर्स So बहुत डिफरेंट है, बट it's kind of like a show that's been made. So I quite like it. It's just that he हाँ has like there are subtle problems in it because it's unpolished. Just like I don't know which places he went to have food. Like he should have properly shown that. Or thoda bahut आई editing थिंक and है shooting का शायद look से better. नीचे, But नीचे नहीं है apart क्या, from that, नीचे नहीं है। no. But it should be like in the thing. In the video, I should know ki, oh, this is where हम्म, we are going to next or something, or this हम्म। is where we are, or this place, मतलब एक मैप something like टाइप that. काइंड ऑफ थिंग, लाइक Like another video प्लेयर मैप। that was really well made was go to Chalchitra, and they were discussing eroticals there. But so it's let's watch that video and then comment ओह on it या, afterwards. ऑफ कोर्स।
भाई हाँ, ऑर्डर किया क्या तूने म्यूज पे? हेलो, तू म्यूटेड है। ओह, वी आर वी टॉकिंग। हाँ ओके, ये अच्छा लग रहा है। हेलो, कहीं तो मेरा स्ट्रीम चालू है। क्या बोल रहा है ये? कौन से फिल्म की बात कर रहा है? अरे ये तो डेफन है नहीं। हेलो,
हेलो, तू आ गया हाँ, वापस? अपने आप चेंज करती रहे। लाइव। स्कूल ऑफ लाइफ ये बुक तो नहीं है, ये वाले हैं। लेंडी पठान, लेंडी पठान। तू वापस गया कि मेरे पे? Okay, okay. The fuck is this? Oh.
Hmm.
Hello. Fuck. Fuck. Fuck बहनचोद. Ah, shit. Hurts everybody. And I think that we're living in a good time right now because we're not going to get away with it anymore. And if we can make it a normal part, talk about it. I gotta get it done. I've had people telling me, I've had a lot of advice. Don't talk about it. You don't have to talk about it. It's done. Legal advice. Don't talk about it. You open yourself up. The most important advice I've gotten is from women that I respect, that do what I do, that that are respected, and that spoke to me privately and said, you know, if you're true to your word and you are sincere about how you want to be part of the solution, not part of the problem, you know, please talk about how you've been part of the problem. That's truly the most helpful thing you can do. Please appreciate, if you're listening to me, that the tightrope I have to walk here is I want to make this a normal part of the process because it should be healthy and easy and graceful. It should be it should be a thing that can be done and doesn't have to create civil war and hysteria. That doesn't make people get re-victimized and attacked. You're not doing me any favors at all. You're only hurting everybody, especially me, if this topic causes you to attack anybody involved. You may think it's in my defense. You may think it's in defense of fairness. I ask you to think about what you think fair is. That's enough disclaiming. I have really had to think about, you know, this and decided I need to talk about it. I want to target about 5 to 7 minutes, and then pull me out of here. After which, hopefully, I've done some good by just talking about this. This is about Fro Your Life closing down, right? Yes, Fro Your Life recently closed down. In 2000 whatever, I can't remember. 2009, 2006, 2000 something. I had the privilege of running a network sitcom, and I was attracted to a employee. I really want to be careful about that language. I think a huge part of the problem is a culture of feeling things that you think are unique and significant because they're happening to you, and saying things like I had feelings for, and I fell for, and all these things. I mean, the most clinical way I can put it in fessing up to my crimes is that I was attracted to a writer that I had power over because I was a showrunner. And I knew enough to know that these feelings were bad news. That was easy enough to know.
I knew that they ran the risk of undercutting people's faith in my judgment, her faith in her talent, the other writers' respect for me, the entire production, the audience. I knew that I wasn't doing anybody any favors by feeling these things. And so I did the cowardly, easiest, laziest thing you could do with feelings like that, and I didn't deal with them. And in not dealing with them, I made everybody else deal with them, especially her. Flirty, creepy, everything other than overt enough to constitute betraying your live-in girlfriend to whom you're going home every night, who is actually smart enough and respectful enough to ask you, do you have feelings for that young writer that you're talking about, that you're paying all this attention to? And saying to her, no, because the trick is if you lie to yourself, you can lie to everybody. It's really easy. And so that's what I continued to do, telling myself and anybody that threatened to confront me with it, that if you thought what I was doing was creepy or flirty or unprofessional, then it's because you were the sexist. You were jealous. I was supporting this person. I'm a mentor. I'm a feminist. It's your problem, not mine. It's you're the one that actually is seeing things through that lens. And so I let myself keep doing it. And it's not as if this person didn't repeatedly communicate to me the idea that what I was doing was divesting her of a recourse to integrity. I just didn't hear it. And it's because it didn't profit me to hear it. And this was, after all, happening to me, right? And so after a season of playing it that way, I broke up with my girlfriend, who I had lied to the whole time while lying to myself. Lied to her about why I was breaking up with her, because I thought that would make having inappropriate feelings for a coworker appropriate if I wasn't involved. I want you to be the one to examine this and every step of the way decide for yourself where I'm making mistakes. I don't want to explain to you what I've learned. I want you to look at this, and I want it to sound relatively unremarkable to you, because that's the danger. I broke up with my girlfriend, then I went right, full steam into creeping on my employee. Now it was even less appropriate after all. Now I wasn't in danger of being a bad person. And then after that season, I got overt about my feelings after it was wrapped, because now, and said, "Oh, I love you," and she said the same thing she'd been saying the entire time, in one language or another. Please, don't you understand that focusing on me like this, liking me like this, preferring me like this, I can't say no to it. And when you do it, it makes me unable to know whether I'm good at my job. And because I finally got to the point where I said to her, oh, this is, I love you, because that's what I thought it was. When you target somebody for 2 years, and it was therefore rejected that way, I was humiliated. And so I continued to do the cowardly thing and continued to do the selfish thing. Now I wanted to teach her a lesson. I wanted to show her that if she didn't like being liked in that way, then, oh boy, she should get over herself. After all, if you're just going to be a writer, then this is how just writers get treated. And that was probably the darkest of it all. I'm going to assume that when she tweets about it, and refers to
trauma that's probably it, because I drank, I took pills, I crushed on her and resented her for not reciprocating it. And the entire time I was the one writing her paychecks and in control of whether she stayed or went and whether she felt good about herself or not, and said horrible things. Just treated her cruelly, pointedly. Things that I would never, ever, ever have done if she had been male. And if I had never had those feelings for her. And I lied to myself the entire time about it. And I lost my job. I ruined my show. I betrayed the audience. I destroyed everything. And I damaged her internal compass. And I moved on. And I never did it before, and I will never do it again, but I certainly wouldn't have been able to do it if I had any respect for women. On a fundamental level, I was thinking about them as different creatures. I was thinking about the ones that I liked as having some special role in my life. And I did it all by not thinking about it. So I just want to say, in addition to obviously being sorry, but that's really not the important thing, I want to say I did it by not thinking about it. And I got away with it by not thinking about it. And if she hadn't mentioned something on Twitter, I would have continued to not have to think about it. Although I did walk around with my stomach in knots about it. But I wouldn't have had to talk about it. And the last and most important thing I can say is just think about it. No matter who you are at work, no matter where you're working, no matter what field you're in, no matter what position you have over or under or side by side with somebody, just think about it. You gotta, because if you don't think about it, you're gonna get away with not thinking about it. And you can cause a lot of damage that is technically legal. And hurts everybody. And I think that we're living in a good time right now because we're not going to get away with it anymore. And if we can make it a normal part of our culture that we think about it and possibly talk about it, then maybe we can get to a better place where that stuff doesn't happen. So that's it. Please don't hurt her. Please don't make this worse on anybody but me. And let's move on. I'm bad at ending things. I'm gonna now have a drink. That was 7 minutes exactly. Oh. Nice. A good apology. Justin Roiland, the star and co-creator of the animated comedy series Rick and Morty, has been charged with felony domestic violence in Orange County, California, in connection with a 2020 incident. According to a criminal complaint filed in May 2020 by the Orange County District Attorney, he appeared in court for a hearing. Roiland pleaded not guilty in 2020 in a statement or not. Stating one another time.
fees is still not charged. Okay. Details of the case including police body camera footage, police reports, abuse investigation reports, medical reports, recordings of interviews are currently being withheld from the public under protective order. Affidavit in support of Rollins' arrest is also sealed. Okay. The fuck is Rick and Morty even surviving this? Fuck. What the fuck is his name? With Create Studio Pro, you can create amazing 3D character explainers just like 2014 में हरियाणा में पॉलिटिशियंस लोकसभा इलेक्शंस के लिए कैंपेनिंग कर रहे थे, पर इस कैंपेनिंग के दौरान प्रदीप सिंह और दूसरे नौजवान लड़के उन पॉलिटिशियंस के पास गए और उन्होंने एक अजीब सी डिमांड रखी, बहू दिलाओ वोट पाओ। ये डिमांड रखी थी जिंद कुआरा यूनियन ने, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है अनमैरिड लड़कों की, ऐसे लड़के जो अपने लिए बीवी नहीं ढूंढ पा रहे, और प्रदीप सिंह इसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा थे। उनकी डिमांड सिंपल थी कि वो अपना वोट तभी देंगे पॉलिटिशियंस को अगर वो पॉलिटिशियंस उनके लिए बीवी ढूंढ पाएंगे। पर बीजेपी के एक मिनिस्टर ने इस बारे में एक वादा भी दिया। भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का मतलब है उन कुंवारों को दुल्हन मिलना जिनको इन राज्यों में नहीं मिली, जो घूम रहे हैं ऐसे एक गांव में। Hello. I'm back. Bruh. Hello. Bro, Yeah. bro. तू देख रहा है वीडियो? क्या मेरा माइक अनम्यूटेड था क्या? नहीं। अब देख रहा है ना? बोल। ये वाला हाँ, देख रहा हूँ। तू मोहक मंगल को जानता है ना? ऑफ कोर्स। भाई इसका नया वीडियो है, देखना है। देखो। Why are Indian men not marrying? Fuck. लॉल। ये तो दिल को छू गई भाई, दिल को छू गई बात। तेरी शादी हो गई साले? इस टॉपिक पे तो सरकार चाहिए यार, सरकार को कॉल करता हूँ। अरे सरकार थोड़ी ना आएगा। मैं पता है रैबिट होल में चला गया था। रिक एंड मॉर्टी मालूम है ना तेरे को? हाँ। रिक एंड मॉर्टी का जो क्रिएटर है, क्या नाम है इसका? जस्टिन रॉयलैंड। हाँ, क्या फकअप हुआ? कुछ तो हुआ है, मेरे को भी पता है। ये डोमेस्टिक वायलेंस, बैटरी एंड असॉल्ट ट्रायल होने वाला है 2020 में। गर्लफ्रेंड के साथ पता नहीं कुछ तो किया। प्लस तेरे को मालूम है ये जस्टिन रॉयलैंड के साथ डैन हार्मन? हेलो? नहीं, मेरे को कोई नाम नहीं पता है ये सब। ओके, ये डैन हार्मन है, ठीक है? ये डैन हार्मन है। ये टेक्निकली इसने क्या किया था कि राइटर है ना, ये जो क्या हो रहा है, जो एक सिटकॉम लिखता था। तेरे को मालूम होगा, कम्युनिटी मालूम है ना तेरे को? नहीं, कम्युनिटी नहीं मालूम? वो क्या नाम है उसका? नहीं। हाँ शिट, कम्युनिटी में क्या नाम है इसका? इसका नाम क्या है? एलिसन ब्री कम्युनिटी में थी। क्या है कम्युनिटी, ये तो बता। सिटकॉम है वो, सिटकॉम है। हाँ तो ऐसा बोल ना। हाँ सिटकॉम था, सिटकॉम है नहीं, सिटकॉम था, ठीक है? तो उसमें ये एक राइटर था, ठीक है? तो इसने क्या किया कि इसका एक जूनियर राइटर, ये शो क्रिएटर था, डायरेक्टर या क्रिएटर ऐसा मतलब, ठीक है? तो एक राइटर था, उस पे इसको क्रश आ गया, ठीक है? सामने से राइटर ने मना किया होगा, पर इसको नहीं समझ आया, तो ये थोड़ा क्रीपी बिहेवियर किया। ओवर्टली कोई सेक्सुअल असॉल्ट या ऐसा कुछ नहीं किया, बट फिर भी ये इसको शो से निकाल दिया। तो ये पूरा एडमिशन बता रहा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट अपॉलॉजीज हो सकता है। मतलब इसके बाद इसको रिक एंड मॉर्टी में जॉब मिल गया, पता है, इसकी वजह से। नहीं तो इसको रिक एंड मॉर्टी से भी निकाल देते, पर इसने ये किया ना, इसको रिक एंड मॉर्टी में जॉब मिल गया। मतलब रिक एंड मॉर्टी तो इसने बनाया है,
जॉब मिलने गया, इसने बनाया रिक एंड मॉर्टी। पर तो ये तू देख, क्या बोल रहा है फिर? कुछ ये समझ वीडियो नहीं आ देख, रहा मेरे ये को। वीडियो देख बस। वीडियो बहुत मतलब इंटरेस्टिंग है। इसने लॉन्डी पे हिट किया और लॉन्डी ने वो करवा दिया, फिर उसके बाद क्या हुआ? शो से ये निकल गया, ठीक है, पर हाँ। तब रिक एंड मॉर्टी भी चालू था, ठीक है, हम्म। पर इसने ये एड्रेस किया ना, इसके बाद रिक एंड मॉर्टी से ये निकलने वाला था, पर ये नहीं निकला, हाँ। सिर्फ इस वीडियो की हम्म। वजह से। हम्म। तो ये वीडियो telling देख। me I've had a lot of advice. Don't talk about it. You don't have to talk about it. It's done. Legal advice. Don't talk about it. You open yourself up. The most important advice I've gotten is ये कहाँ पे from बोल रहा है ये? ये स्टैंड अप स्टेज पर। ओह, ओके। women that I respect, that do what I do, that are respected, and that spoke to me privately and said, you know, if you're true to your word and you are sincere about how you want to be part of the solution, not part of the problem, you know, please talk about how you've been part of the problem. That's truly the most helpful thing you can do. Please appreciate, if you're listening to me, that the tightrope I have to walk here is I want to make this a normal part of the process, because it should be healthy and easy and graceful. It should be a thing that can be done and doesn't have to create civil war and hysteria. That doesn't make people get re-victimized and attacked. You're not doing me any favors at all. You're only hurting everybody, especially me, if this topic causes you to attack anybody involved. You may think it's in my defense. You may think it's in defense of fairness. I ask you to think about what you think fair is. That's enough disclaiming. I have really, really had to think about, you know, this, and decided I need to talk about it. I want to target about 5 to 7 minutes, and then pull me out of here. After which, hopefully, I've done some good by just talking about this. This is about Fro Your Life closing down, right? Yes, Fro Your Life recently closed down. In 2000 whatever, I can't remember. 2009, 2006, 2000 something. I had the privilege of running a network sitcom, and I was attracted to a employee. I really want to be careful about that language. I think a huge part of the problem is a culture of feeling things that you think are unique and significant because they're happening to you, and saying things like I had feelings for, and I fell for, and all these things. I mean, the most clinical way I can put it in fessing up to my crimes is that I was attracted to a writer that I had power over because I was a showrunner. And I knew एक बात बता, तेरे को लगता है कि कभी भी ये डायनामिक काम कर सकता है? हेलो, अंदर चोट चला गया। Bro, I'm thinking Hello? if we can like come on every week once for an hour and then discuss cool shit, and then also like हाँ, एक talk बात about बता, like या alpha dropping stuff. सुन, do you really Like think? for abhi, like how OpenAI's ChatGPT is going to be incorporated into their API now. So it's basically the free version is basically going to stop very soon. हाँ, of course, वो तो स्टार्टिंग में बोला था उन्होंने, स्टार्टिंग से बोल के रखा है, चैट जीपीटी में लिखा हुआ है, but yeah, that's not the point. And it's also going to be very quickly. It's not very quickly. It's already integrated with Azure API now. So yeah. There's this thing like people are sending me, but I don't know. I don't want to open up right now Instagram or stuff. There's this reel about some certain AI. मेरे को Instagram नहीं खोलना. Look, I'll try to get that reel. तब तक हाँ मैं क्या बोल रहा था? Do you think कि will this ever work out in any circumstance? Boss junior like relationship.
तेरे को क्या लगता है what would be the ideal way? For a place, I mean, to be honest, like they should be able to work out, तो in all कैसे? honesty, because No, like that's like the canonical place for where from where you meet वही people, वही right? ना, Like नहीं that's पर the place where but think like about it like this. before online, अबे चूती complete तो कर रहे थे, हाँ बोल. हाँ, नहीं ऐसे सोचना कि अपन दोनों साथ में स्टार्ट किए, ठीक है, अपन दोनों स्टार्ट में काम किए, तू मेरा बॉस बन गया एकदम से, and suddenly now this relationship doesn't work out in this case. Yeah, okay, like तेरी बात नहीं कर रहा, मतलब let's say a girl and a boy are working together, let's say the place is sexist and the boy gets promoted early, not sexist, कुछ भी, I don't want to put labels. तो boy को promotion मिल गई. Now boy is a senior of the girl. Now is it so that they can't date? What, अरे but depends on the context, no? What the fuck do you mean by they can't date? like Was they अगर dating before? direct boss हो गया, ठीक है, earlier they were like friends and maybe there was some flirtations going on, ठीक है, maybe clear नहीं है बे, वही तो, that is also one more thing, right, कि you can never be sure on consent when it comes to like Bro, you're fucking mixing up 10 different things. Your whole नहीं premise is नहीं only so. नहीं देख, This thing. there's this, What is your question? What are you fundamentally trying to understand? my Like fundamental that, question whether is, whether a person who is like whether a person who was whether two people who joined at the same time, and then one grew much more faster and quicker than the other, yeah and whether they can date or not. Like, yeah what the fuck do you mean by whether yeah they can date or not? That yeah depends. because That totally उस depends time on पे the भी person, नहीं on नहीं those नहीं two, right? Like whether नहीं they नहीं are नहीं comfortable नहीं with नहीं that there's dynamic or not. this connotations, right, कि देख, there's two different aspects to this. One aspect is the one we discussed right now, ठीक है, कि you both joined at the same time, one became your boss, and okay, there might be something going on, but at that point the consent is consensual, you can understand because you are at the same stage, तुम दोनों same जगह पे हो, ठीक है, तो What is this that you're talking about? like What is let's the say consent for flirtatious, what? Consent for relationship? relationship, let's not say relationship, let's say you are flirting with the girl, okay, तू गर्ल के साथ फ्लर्ट कर रहा है एंड शी इज Yeah. रेसिप्रोकेटिव, ओके Yeah, okay. ओके, Now, तो first of all of the firstly, all of this is anyways very vague. What do you mean hypothetical, by reciprocation and yeah so, of course, like मैं there is no मैं there's no जानबूझ concrete के वेग बना demarcation रहा हूँ, मैं between जानबूझ these के things. वेग बना रहा हूँ क्योंकि that's Yeah, another but that's part how for it this, really is. another aspect is कि मैं So ऑलरेडी तेरा बॉस हूँ, ठीक है, don't go another aspect. Finish our first point. yeah, first All point this. is this only, Ah, the so first point is this, that she was reciprocating and then you suddenly became her boss, and at that point if you get into a relationship you could say that this is a like stepping stone, कि हाँ, कि starting में जब हम दोनों same level पे थे तो वो reciprocate कर रही थी and I was also interested, she was also interested, and then when I became her boss the connection was still there, so we ended up together. That makes that makes sense, okay, but okay, if I'm your boss starting से, ठीक है, मैं starting से तेरा boss हूँ and then I'm flirting and let's say the girl reciprocates back. Now the point is there is this confusion because is she reciprocating because I'm a boss or is she reciprocating because she's interested? That is where the problem is. No, that's not a problem. That's your fucking insecurity. What the fuck do you mean by is she reciprocal? Like अरे, that's not अरे क्योंकि देख it is इसके of साथ भी course, वही हुआ, it's your fundamental. इसके साथ भी वही हुआ, वो अरे, इनिशियली but वो what बोली, the fuck do you mean by that? How does that any matter anyways? Whether she's reciprocating just because I'm just क्योंकि listen, I'll tell you the whole story what happened here, okay, so he had a crush on a writer, okay, and initially they were flirting, or according to sources which she also confirmed, she reciprocated, but she reciprocated because he was a boss, okay, like she replied to his flirtations because she okay, was, she did that. yeah, फिर then he left his girlfriend, okay, so that it won't be bad, and then वो full on चला गया उस पे, पर वो बोली कि नहीं मैंने आपको I'm not interested in you, that was just because you were the boss, and now this guy is like, okay,
So you are gonna be like this, then I'm gonna treat you like shit. And that is why he was kicked out. That is a separate story. But this thing does not make sense, right? कि अब response आ रहा है, how do you know that that response is because you're the boss or because she's actually interested? Because that's the problem that First happened of with all, this what dude. he did was wrong in every sense. Yeah, of course. The fact that इसके he had a girlfriend. No, there is no vagueness here. It is very simple, and he's played all the wrong cards. He yeah, had a girlfriend and he was hitting on somebody else. That girl was reciprocating. He became serious and left everything. And before before yeah, of going on a course. date or anything, he Yeah. what the fuck तू do you mean? तू 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 video देख, तू video On that. देख, video देख. So You'll understand. it's fucking stupid. Look, Yeah. how this should have been legit was if he had a girlfriend. First of all, he would have broken up with her if he didn't like whatever he had with her or whatever his situation was. Then if he proceeded to like that girl, he would have flirted with her, which is fine. If had she been reciprocating, he would have gone and then taken her out to a date. In the date, that's where everything would That's have the problem, ended. right? Like कि if वो the girl already really liked वो her, she would have gone already to date. If she didn't like her, the girl wouldn't have gone on the date and would नहीं have नहीं clearly told her or that's the communicated problem, that, bro, right? sorry, you were hitting on me, and what's the problem? He's like he wants to have his apple and eat it at the same time because क्योंकि देखना he's already in a committed relationship. He's in a live-in relationship. At the point, So then what was your point? What are you saying? Where are you you were my saying that point it is is vague. my It's yeah not yeah vague. it is kind of vague. You can't No, understand it the is intention. not. What is So vague? no, because in a workplace, That is why you're supposed to talk to people. yeah, You are but not in a supposed to workplace, stay like अरे तू वो सोचना कि if you are a senior, ठीक है, तू किसी का boss है, there's like this divide that comes between you and your boss, right? तू directly boss को मुंह पे थोड़ा ना बोल सकता है कि I'm not interested. There's, of course, you can say it, of course, depends on the boss. nahi, see, first of course you cannot say it. That's of course true. That's why most workplaces will not allow people to have relationships within their own teams. I Yeah, understand that, but like like that, it is not conducive to working, and that person will most probably not be able to deny it. कोई doubt ही नहीं है इसमें. But that does not mean that you can mistake it to be like a thing, yeah, right? that's the Because problem, right? you're You supposed to know cannot, that. you cannot, that's the point. If you are a boss, then the ideal thing is you just do not date your juniors. I think that's the only. No, that is not ideal. Are you Bre, fucking stupid? You go but talk to a कैसे? junior and then you respectfully ask her out to date, and most probably, and then see if you're interested or not, and just let her know. Yeah, that's That the does not make problem, it right? like That's make the it more problem, right? awkward. You No, can. that's not a fucking problem. Nahi, it's a if you're problem. It's a problem if because you it opens in a up. power dynamic, if you are more powerful, you can make it normal. How? What do you mean how? You'll always have Like that power. ऐसा नहीं है कि तू डेट पे चला गया तो वो पावर तेरे हाथ से चली गई. अरे She तो could वो she could of course. she could say yes to the date fearing that power. And will that be true consent Arey, then? so you've got to talk it out now in the date. What the fuck are you listening? What will you do on the date? That's what you have to establish that na as the person who has the power. That's my point. It's such a gray area कि तू डेट पे भी It's not बोलेगा a तो gray area. तू डेट पे भी बोलेगा तो वो क्यों बोलेगी तेरे को मुंह पे अगर तेरे पास पावर है. क्या तू चूतिया है क्या? Why क्यों नहीं बोलेगी? What do you mean? Like because like you need to see. There is a premise where you are see there are two ways of doing this. There is one way of saying that whether most people should whether seniors should date their juniors or like a team lead should date a person in their team. Now of course she will not like you can always consider that why will she deny me or why will she reject me or all of that because she's afraid. That's right, but that's also because it's part of your insecurity. Like if you're a person who's actually who actually likes her, you'll first establish this very clearly that you're not coming from a place of power and you're not fucking going to abuse your position or something like that, and then establish, and you have to lay that out while also hitting, if not while hitting on her, at least while taking her out on the date. And if she does not, that's the point of making her comfortable, bro. What the I fuck mean do you think? at that point अगर वो इस point पे भी if Like you are like you, of if you course,
if you There's clearly nothing more हाँ, than that you can. There's nothing yeah, more you can do than that. yeah, And because then अगर उसके everything goes बाद to shit. Fair enough. अगर उसके बाद भी अगर she's like, the problem is there's this thing that you don't have any recourse, but she does. There's also that point. Because at the end of the day, you are the one with the power. वो कल उठ के बोल सकती है कि he abused the power. But you don't have anything to like say कि I clearly laid the ground rules. Because the world will say that even if you laid the ground rules, you had the power. I mean, sure, the benefit of doubt is of Yeah. course to the girl or to the person who is in a junior Yeah, position. yeah, of And course. And most most probably, often a girl. yeah. Right, there is no doubt, and that's there for good reason, right? Because, like you said, that girl or that person will most probably not be able to reject even if at like a date or whatever. Yeah. But that's assuming malintent, and Yeah, yeah, sure. sure. Malintent. Yeah. But that is my point, right? Ki Look, the point it's a is, very gray area. like, It's if very you hard do, to navigate this. Like workplace mein, I mean, of workplace course mein it's fucking it's hard to navigate, but that does not mean you can go to shit. And the problem is this person was a bloody asshole. That's the problem. yeah, Like, of he course. was wrong in all We are from not all that's why intents and purposes. that's why we are not taking And him that's as why like it's a bad example. no, that's why we are not taking. It's a bad example because he's giving an apology, dude. There's no better way to judge him as a Doesn't bad even deserve person. the Yeah. apology. There is no, No, I mean like, there apology is no was point. no apology was needed because at the end of the day he did hurt someone. Okay, if he hurt his So, bro, girlfriend, I don't know what his apology. I don't know what he achieved with his apology. no, Most he probably, I don't achieved think his his apology. character changed or something. No, he got Rick and Morty, dude. The one of the most famous cartoons. Like he must be earning like royalties like fuck because he I'm due to telling. this video he got saved. He's like still the But co-creator of. that's a fucking performance. That apology is a bloody performance. That's what I'm saying. Bro, Like, but still I don't buy the fact that he's changed after that. I mean, sure, you can say he has changed or not, but the fact that he has apologized on a public forum means something because look at others that have had similar things. Has anyone even apologized? Have you seen like, have you ever Jeffrey Epstein seen Jeffrey Epstein apologize? And that dude did some Wow, serious comparing shit. this guy to No, that's the problem, right? Epstein. He did You like think some. You think Jeffrey Epstein is going to apologize? Yeah, of course. Like, if he apologizes, he has to like say that he committed all those crimes. That's different. But yeah, sure. Do you want to continue watching this video, or do you want to watch this Why Are Indian Men Not Marrying? I think Whatever you feel like. yeah, I mean Either this. works. I think this was the only point I discussed. Like I was like mind blown because in my head I'm like it's a very bad idea to like have a workplace romance when you are a senior and the other person is a junior. No matter what, you're male or female, because even males who are like juniors, even though it's not discussed much, they still have like certain cases here and there, and. I don't know. I don't know if the male junior would have. I think the girl would still have more recourse, and it'll always be the benefit of doubt will always be to the girl most probably. But yeah, No, the benefit of the doubt is always most likely to the victim, right? Now the point is like then who do you so how define do you know the who the victim is? yeah That's what I'm then saying. then you're like no most likely That's the no that's no such a false way of claiming it. The benefit No. of doubt is to the victim. What the no fuck do you mean by no that? it's like There it's is no like victims. There is No. no victim established now. no there is right. The one who does not have power is always the victim. No. Yes. When a girl no, that's clearly not the case. Like unless When a girl unless when a like, girl is a superior, when a lady is a superior and the junior is the person, is a guy, and the guy is hitting on the girl, who do you think is the victim? I mean depends if he's hitting on the So, but you superior. said, No, but you said, he's but you hitting said on the right now superior, that right? the victim is always the person with the power. The power is the girl, but she's being No, she's being and hit on, but she getting has the recourse of she being the harassed. superior can like kick him out. Yeah, but yeah, sure. That's Yeah. again a false thing to say. Like again to say, yeah, the victim is always the one without the power. Okay, yeah, sure.
So, but I can't like agree with the fact that the one being hit on is always the victim. Is it so? I don't think so. No, but I'm not saying that. When did Then I imply that? then according to you, who's the victim? Depends on case to I case have no clue. basis. Depends on the Yeah, case. yeah. But the benefit of doubt is always to the woman. Uh, is it so? I would say it's always. I would think so. I would say it was always on the aggrieved person, not the victim. No, I don't think so. I mean, sure, there's like this bias of like women rapes being more like thoroughly, like what's say, a woman's rape case being more thoroughly investigated than a man's rape case. Most likely they just declare him something. But yeah, sure. Yeah, you can say that. 2014 में हरियाणा में पॉलिटिशियंस ये लोकसभा ये इलेक्शन ज्यादा के अच्छा है. कैंपेनिंग कर रहे थे पर इस कैंपेनिंग के दौरान प्रदीप सिंह और दूसरे नौजवान लड़के उन पॉलिटिशियंस के पास गए और उन्होंने एक अजीब सी डिमांड रखी, बहू दिलाओ वोट पाओ। ये डिमांड रखी थी जिंद कुआरा यूनियन ने, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है अनमैरिड लड़कों की, ऐसे लड़के जो अपने लिए बीवी नहीं ढूंढ पा रहे हैं। और प्रदीप सिंह इसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा थे। उनकी डिमांड सिंपल थी कि वो अपना वोट तभी देंगे पॉलिटिशियंस को अगर वो पॉलिटिशियंस उनके लिए बीवी ढूंढ पाएंगे। और बीजेपी के एक मिनिस्टर ने इस बारे में एक वादा भी दिया। भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का मतलब है उन कुंवारों को दुल्हन मिलना जिनको इन राज्यों में नहीं मिली जो घूम रहे हैं ऐसे एक एक गांव में। 2007 में एक सर्वे हुआ था जिसने दिखाया था कि करीब 51% नौजवान लड़के अनमैरिड है, और जब 9 साल बाद सेम सर्वे हुआ तो उस सर्वे ने दिखाया कि ये नंबर अब 61% हो गया है। तो ऐसा क्यों है कि इंडिया में यंग लड़के शादी नहीं कर रहे? प्रदीप सिंह कहते हैं कि प्रॉब्लम यह है कि उनके लिए लड़कियां ही नहीं है। इनफैक्ट अब प्रॉब्लम इतनी बुरी हो गई है कि कुछ लोग हरियाणा से बाहर जा रहे हैं बीवी ढूंढने के लिए, जैसे बंगाल, बिहार, असम या फिर झारखंड। और इन बीवियों को कहा सरकार बंगाल गया है ना. सरकार भी प्रॉब्लम आउट ऑफ स्टेट बीवी ढूंढ रहा है. बाहर जा रहे हैं बीवी ढूंढने के लिए, जैसे बंगाल, बिहार, असम या फिर झारखंड। और इन बीवियों को कहा जाता है मोल की बहुएं। तो क्या कारण है जिसकी वजह से इंडियन लड़के शादी नहीं कर रहे? इसी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो में हम 3 कारण के बारे में बात करें। पहला है कि लड़कों के लिए इतनी लड़कियां हैं नहीं। जैसे प्रदीप सिंह ने कहा कि बीवियां मिल नहीं रही। ये हुआ क्यों है? इंडिया के सेक्स। तेरे को क्या लगता है व्हाट माइट बी द आइडियल रीजन क्या कि क्यों अनमैरिड लोग हैं? सेक्स रेशियो इज वन. क्या पता भाई? मेरे I को have no लगता है clue about this. कि I'll मेरे have को to go search about this. कि what he's saying is true or not. नहीं, क्योंकि आई सर्च अबाउट दिस. सेक्स रेशियो कैन प्ले अ पार्ट बट they are attributing the problem is कि they have like a wholly like different idea of why people are not being married, because एक जगह पे according to certain newspapers कि people are not marrying because women are being educated, and I'm like that is so backwards. like तुम कैसे attribute कर सकते हो कि education की वजह से लोग marry नहीं कर रहे? Yeah, because they're marrying later. No, into their marrying career. later, okay, they're but becoming more independent and all of that. Yes, yeah, sure, makes sense. makes sense, but not being married, that's not the No, fault that of also women makes being. sense. No, that's not the fault of women Who is being saying that entered. it's fault of Yeah, women? that is what That they statement said. does not imply that No, it is a fault they of said women. it's because women are That's being pretty educated. stupid. नहीं, मैं थोड़ा ना बोल रहा. अरे तो how that? That's a perfectly fine statement that actually explains there can be a valid reason, and I would understand it to be a valid reason. That is not a fault of the woman, and that statement does not imply that it is a fault of the woman. But in a certain way it does, right? The- No, it does not. It only does when you're implicitly premise that being educated is, or like people not being married is a problem, or and the fact that women are the cause of it. So that's why they are whatever. that That's is not also the point. true. That is also true. People not marrying is Who says it's a certainly a problem? problem. Yeah. Something But is no, happening and that is it's a valid cause. it's like a societal thing, right? कि अगर हम इस सोसाइटी में रहते हैं, वी आर काइंड ऑफ लाइक सिटी पीपल, राइट? अपन सिटी वाले हैं, अपने माँ बाप समझ जाएंगे कि अगर हम बोलेंगे कि नहीं मैरी करेंगे. बट टाउन्स एंड विलेजेस में there's like this pressure, right, that you have to get married before 30.
Be that as it may, how does that statement is not implying that girls are the problem, and that is not a wrong statement. How is that a wrong statement? What are you What? trying to say? That is a perfectly valid statement. That because girls are being educated more, they are marrying later and later into their life, and often choosing not to marry because they are becoming more independent. Good. Yeah, but that's the antithesis to that is the boys are now against women being educated because they are being educated and they're not marrying. That is the whole antithesis to the point. That is what they are saying. Ki boys don't want women to get educated because when they get educated, they are doing this. That is the whole point. That is my thinking that कि ये लोग ये advocate कर रहे हैं. They're advocating this. Like those How in are the they villages. advocating? But they didn't advocate for that though. They just said No, that. they that is what they are. आगे देख वीडियो में. रेशो की वजह से इंडिया में हर 1000 लड़कों I में think you'll करीब see. 925 लड़कियों का जन्म होता है। दूसरे देशों के कंपैरिजन से ये सेक्स रेशो बहुत कम है, पर हम में से कई लोगों को पता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। अबॉर्शन अनुमति निकली तो रास्ता निकाल के इसको वहीं से ही रवाना कर देंगे। 2013-2017 क्या के चल बीच रहा माना है? जाता है कि 4 ये लाख वीडियो कम लड़कियां पैदा हुई इंडिया में जितनी ये हुई। अबॉर्शन के बारे में प्रॉब्लम क्या है कि हमारे समाज में एक लड़के और लड़की की वैल्यू बहुत डिफरेंट है। फिर दहेज डालिए हाँ लूट लीजिए डाल दो। जबकि लड़कों के लिए ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, उनकी वैल्यू पॉजिटिव है। इनफैक्ट मजाक मजाक में लोगों ने वेबसाइट्स भी बना दी है जिससे कोई भी लड़का कैलकुलेट कर सकता है कि उनको कितना दहेज मिलेगा। संकट में है। क्यों यार ये क्या एड्स हैं? अब ये जरूर है कि हरियाणा और पूरे देश का सेक्स रेशो इंप्रूव कर रहा है, पर जो गलतियां 10-20 साल पहले हुई थी उसकी वजह से आज के लड़कों को स्ट्रगल करना पड़ रहा है। जैसे प्रदीप सिंह जो उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस बेरर थे, उन जैसे लड़कों को संघर्ष करना पड़ रहा है हरियाणा के बुरे सेक्स रेशो की वजह से। अब इस प्रॉब्लम की वजह से लड़कियों पर क्या असर पड़ रहा है? दो तरीके की लड़कियां हैं, एक लड़कियां जिनकी पावर बढ़ रही है और दूसरी लड़कियां जिनकी उल्टा पावर घट रही है। कम लड़कियां होने की वजह से कुछ लड़कियों के पास पावर है ये चूज करने के लिए कि वो किनके साथ शादी करना चाहती है। जैसे यूपी के औरैया डिस्ट्रिक्ट में एक लड़की ने अपनी शादी कैंसिल कर दी जब उसको ये पता चला कि दूल्हे चश्मे पहनता है। इस चीज को चेक करने के लिए लड़की के परिवार ने उस लड़के को कहा कि वो एक अखबार पढ़े बिना ग्लासेस के। अब इस लॉजिक से मैं एग्री नहीं करता, पर उदाहरण मिला तो आपको बता दिया। एक दूसरे उदाहरण में एक लड़के को रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि वो एक मैथ्स टेस्ट को पास नहीं कर पाया। वहीं दूसरी तरफ है वो लड़कियां जिनकी सिचुएशन बेहतर नहीं हो रही इस चीज से। जैसे हमने हरियाणा की मोल की बहुएं के बारे में बात करी, इनमें से भाई कई मैं तो फेल हो गया। किया जाता है ऐसी शादी करने के लिए। मोस्टली उनका परिवार इसलिए एग्री करता है क्योंकि ये ऐसे परिवार से आते हैं जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं है। 2-2 3-3 जगह बीच में बहुत सी लड़कियां जिस वजह से शादी के बाद उनको एक ऐसी स्टेट में जाना पड़ता है जिसकी ना तो वो भाषा और ना ही कल्चर जानती है। और ये प्रॉब्लम भी हमारे समाज को बदल रही है। लाइक जैसे तमिलनाडु के ब्राह्मण अपने लड़कों के लिए एक बीवी ढूंढने के लिए यूपी और बिहार की लड़कियों को देख रहे हैं। तमिल ब्राह्मण एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने कहा कि 10 ब्राह्मण लड़कों के लिए बस 6 लड़कियां ही उनको तमिलनाडु में मिल रही हैं और अब वो कोऑर्डिनेटर्स की मदद ले रहे हैं लखनऊ, दिल्ली और पटना में, जिससे तमिल लड़कों को लड़कियां मिल जाए। दूसरी प्रॉब्लम है कि लड़की के परिवार भी ऐसा लड़का चाहते हैं जिसके पास सरकारी नौकरी हो। जैसे हफ्सा के बारे में बात करते हैं जो कई सालों से आदिल के साथ एक रिलेशनशिप में थी। आदिल वेल एजुकेटेड था, ब्रो अच्छे परिवार से था। ये सब तो आज की बात नहीं है, कब से चलता आ रहा है। बात तो सही है। Like, this बट is आई nothing थिंक new आई थिंक that आई थिंक don't ये talk एक about और भी है something. ना कि ये बहुत इंसुलर है। मतलब and I don't know ये कितना accurate है. I would like the thing that he's saying that girl children are aborted more right now. I नहीं don't know उसने whether this is नहीं as recent no or not. he didn't say that. He said between He did say that. 2013 and 2017. Between So that's 2000 still fucking recent, and I still don't know in India missing yeah at birth each year. नहीं, so इसके पहले how much was the case? क्या कि Like that number alone does not show anything. What's the trend? That's more interesting. And I'll like girl abortion it'll be pretty trends, weird to see that it's increasing. female feticide. I think it's I can't read anything from this thing for some reason. नहीं ये रहा ये तो मेल टू फीमेल सेक्स रेशियो है। At birth देख लेना, fetal ultrasonography Dopplers. नहीं at birth देखना है ना अपने ratio at birth India and it should come up right? Sex ratio at birth नहीं है क्या images में? अरे sex ratio क्यों देख रहा है? sex ratio at Percentage birth of है। female feticides देखना. Sex ratio at birth है। हैं? Oh,
ये बॉयज टू गर्ल्स है. Number of male births to number of female births. ठीक है. Yeah, so it's been going down, which Yeah. means it's been increasing. And that's pretty recent. That's 2010. 2015. See, that makes more sense. No, but the graph is skewed, bro. See? How is it skewed? What do you mean by skewed? Okay, हाँ ठीक है. 105 से पीक गया था 111 में 2000 के अराउंड 2010 के बाद. Yeah. हाँ 2010 के बाद 111 से it has come down to 108. Yeah. Makes sense. But you do understand, right? 2012 से 2020 के बीच में those are just kids right now. हाँ. So that does not What are you affect. talking about? That bro? does not affect, right? The one that we are I'm concerned just about this. contesting the one single point of data that he gave to show, like somehow validate his video or something. Like not the whole video, but like his emphasis, his point. And that's what I was saying, and I was right. That bloody data point does not prove anything. That's a stupid data point. At birth. Huh. Wait, So what? then how do 2013 to 2017 between 2013 to 2017 girls that were born who were missing, so basically most probably due to feticides or whatever, Yeah. different child killings, how does that affect the person that was not being able to marry right now? It doesn't. So Because it's a so, trend, like, right? It's a trend that has been going on. And no, it's not. It's a fucking reverse trend. It's not a trend now, that's right increasing. now, It's a it's trend right that's been now, decreasing. right now, it's in a decreasing turn. But the people that we are concerned about, they were born during the increasing trend, right? So I mean, I understand where you're coming from because this data point Yeah, does not make that sense whole context video, right now. exactly. But That data point does to not also make sense. Neither does that. Neither does the trend make sense because the trend's actually reversed now. no, So yeah, trend is reversed, but but the people not that only we are is the sex concerned ratio with, improving, which he actually mentions, the sex ratio is improving. yeah, Most of like and also what we saw was just the sex ratio, not the sex female ratio at feticide birth. ratio, Yeah, sex ratio at birth. which is a bit more problematic. But yeah, if female feticides are also decreasing, that video is basically useless. Apart from the fact, what what I'm trying to tell you is that there will be lesser and lesser people who will be marrying earlier. Still, that's I because mean, that's the because of education levels are education. Yeah, increasing. education levels are Yeah. increasing. That's okay. That is actually not the point here. My point is, for us, it does not matter that much. But for the people in towns and villages, it does matter a lot. अपने को क्या ही फर्क पड़ेगा? We are actually not at all. It's an insular point, but insular in the sense that insular for cities because it does not really affect the city that much. Get my point? नहीं, I still don't get your point. तू क्या बोलना चाह रहा है? अरे ये अपने को अफेक्ट नहीं कर रहा ना ये जो भी. हाँ तो ये तो अपने को तो कभी अफेक्ट कर ही नहीं रहा था. हाँ वही बोल रहा हूँ ना ये अफेक्ट किन लोगों को कर रहा है? ये मेजॉरिटी ऑफ इंडिया को कर रहा है बट वी डोंट कम इन दैट. क्या 10 साल बाद भी करेगा? आई थिंक श्योर या करेगा बट एग्जैक्टली नहीं बट पर वो जो रीजंस दे रहा है उसकी वजह से थोड़ी ना कर रहा है. वही तो मैं समझा रहा हूँ तेरे को. क्या कुछ नहीं भाई, छोड़. तू यही बोल रहा है ना वो इसकी बात थोड़ा ना करे कि ये फीटिसाइड अकेला रीजन थोड़ा ना. सेक्स रेशियो स्क्यूड है. कितने रीजंस उसने बोले? क्या क्या रीजंस बोले उसने फीटिसाइड बोला, उसने सेक्स रेशियो बोला, हाँ, और एजुकेशन बोला, प्रेफरेंस फॉर ग्रूम गवर्नमेंट जॉब बोला. एग्जैक्टली, प्रेफरेंस फॉर ग्रूम गवर्नमेंट जॉब आज नई बात है क्या कोई? नहीं. अगर वो सेक्स रेशियो ज्यादा भी रहेगा ना तब भी प्रेफरेंस फॉर ग्रूम गवर्नमेंट जॉब बहुत ज्यादा है. Will always be there. There is like it's nothing new that's happening is what I'm trying to tell you. Yeah, but do you think that trend will disappear in the next 10 years? What trend? Ki preference for government job? No, right? No, it will not. No, of course not. But it doesn't affect us, so we don't care.
हमको वैसे I'm भी एफर्ट telling नहीं the करना. whole thesis of this video is useless because first of all the reasons that he's telling you that affect the bloody trend are a reversing this thing. Like Sex ratio, I you don't mean? know. Yeah, sex Yeah, ratio so reversal that trend. does not matter. So the people having more, I don't know what, people not marrying is not because oh the sex ratio is declining. The sex ratio is in fact increasing. That's just an outcome. This is what it used to happen like 15, 20 years back also. I want to see Abhi, what he's saying is that people are not marrying that much in the villages. That's the fundamental claim. Why are Indian men not marrying? That means that implies that Indian men used to marry. But I would contest that, to be honest. I don't know if that's true or not. I mean, I would say that is true because Indian men used to marry when their parents used to get them brides. कहाँ से आती थी ब्राइड्स जब सेक्स रेशियो इतना खराब था? सेक्स रेशियो हमेशा से थोड़ा खराब था. बहुत ऑफ कोर्स हमेशा से खराब था, कोई नहीं डाउट ही नहीं है इसमें. फीमेल फिटिसाइड्स तो हमेशा से बहुत हाई थी. नहीं नहीं नहीं, क्या बात कर रहा है? ट्रेंड देख, ये रहा 1901 में, ठीक है, अब बढ़ा है, अब जाके बढ़ा है 1901 में, हाँ तो 1972, 1990 1931, 1950, हाँ तो 1945 डिक्रीजिंग ट्रेंड 1901 में is था. pre अरे तो 1940 प्लस. हाँ एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. 1945 के बाद से देख तू, हाँ 1945 दैट के इज बाद ब्लडी से डिक्रीजिंग सेक्स रेशियो. एक साल एक बार इंक्रीज हुआ 1945 से 1946, एक बार इंक्रीज हुआ, then it's decreasing. Yeah, of course I agree. But it was still higher than it was till now. That's my point. वो देखना 1961 में 940 था, 941 था, which is still higher than whatever it is at the latest point of this census, 940. So I imagine they would not have that much problem getting some people. I don't know. So you're saying apart for specifically 19 for specifically those people who are in that 10 years, तुम्हारा total number of women have been like decreased, which is a Yeah. stupid thing to say. No, ये because 19 because look at this. 1971 से 1991 are the 1971 people marrying right now? No, they are not. Are the people who are who were born in 1991s marrying? Maybe, which is what 30 years, which is still very late for in this thing. Indian villages. Indian villages people get married at 23. So 23 means born in 2010s, 2000s. No, 2010s. Around 2000s. Yeah, 2000s बोला maybe bro. 2000s. Yeah, this age 1927 to 927 से 933 के बीच में जब sex ratio increase हुआ technically. चूतिया है क्या? That is 9. हाँ. अच्छा that is 2000. Yeah, 2000s. जहाँ पे technically sex ratio increase हुआ है. So your premise is since sex ratio increase हुआ उस period of time में, then that means that कि they should have no problem getting married, is what you're saying. Because it makes sense. It tracks. No, portraying is wrong. Yeah, it tracks because okay, तेरे हिसाब से तू जो बोल रहा है ना, you are correct. I think he is wrong here also because तू देख ना, जिस time period की बात हम कर रहे हैं अभी 1991 से 2001 के बीच में, that time period. I have already been married. Exactly. Yeah, because we don't really care about 1981 to 1991 because these people probably got married. This is the time period that we are focused on, 1927 to 933. हाँ, makes sense. क्योंकि अगर increase हुआ है तो then they should have no problem getting married. Yeah, like not if they most probably they won't marry right now, but they will marry people who are. No, because they'll have enough pool because no, the sex this ratio is anyways this is increasing. 1991 to 2001 is like what 20s. People in their 20s to 20s to early 30s, which is the actual time. Or what? no. In villages, yes. Yeah, mid 20s to mid 30s. Yeah, mid 20s to mid 30s, technically. No. What though? Yeah, ये period जो 1991 से 2001 वाला है. पर उससे क्या? What are you trying to say with Yeah, this?
mid-20s to mid-30s, which is the like time when people actually get married. Okay, fair. So अगर उसके बीच में sex ratio improve हुआ है, that means that more हो women रहा है. were, yeah, that means that more women were born as compared to the previous generation. So if previous generation got married, there's Exactly. no connection with this generation not being married because of sex ratio. No, Yeah. like they might not marry, they might face more problems, but they'll eventually have enough. No, this they thing. So not that is face the more problems, right? The people in the previous generation faced more problems because they had overall less women per male. हाँ तो अरे man, you never just I क्या bro? अरे You don't really marry a person who's exactly your age, man. You marry people who are 10 years younger also. That's how it used to be. okay, fuck, हाँ, shit, child marriages, shit, So there will always be a pool, yeah. Also, that's not what child marriages were. Child marriages were people marrying at a very early age, that is both the groom and the bride were bloody Is it? kids. नहीं, Yes. एक बंदा बहुत ज्यादा बुढ़ा होता था, दूसरा बंदा बहुत जवान ही होता था child marriage में. नहीं, तो no. that's just pedophilia then. That is, I mean, yes, kind of. Ah, interesting. So yeah, so sex ratio तो doesn't make sense. So then education is the only thing that makes sense. Yes, of course. So Which also is good. Not only good, it absolutely makes sense, and it should, because more women are getting educated, and the society is pushing for that, or like the government is pushing for that. I Yeah, mean, yeah. But what that do we video is do? stupid. Yeah, but Stop. problem तो है ना, एक problem ये है कि these people are not getting married. That is a problem. And these people need to get married because otherwise these people are going to commit like these people are going to do like these things. किधर गए? Impact on men. Crime, yeah. Consequences he's giving is crime. I don't know how he came to here, but he did come to crime. He's like, if these people don't get married, they commit crime. Now, I'm not sure how well that tracks, but I can see where he's coming from. No, I mean, everybody can see where they're coming from, but that's bloody stupid. Improve Yeah. your system. Yeah, that is like the point of you are crying for a societal change. I mean, both ways we are crying for a societal change, technically. इधर भी अगर तू educate कर रहे हो तो that is also a societal change. If you are trying to get people off of like हम time waste कर रहे हैं बेंचो चूतिया आप डिस्कस करके. हाँ बात तो क्या सही है. डिस्कस कर क्या रहे ही डिस्कस कर रहे हैं. कोई अच्छा वीडियो है? हैं? यूजलेस वीडियो है वो. ये मैंने देखा. ये क्या था? हाँ ये क्या ये था? देखा तूने? भाई ये मैं क्या ऑर्डर करूं बता. और व्हाट इज दिस इज क्या बोलते हैं अरे वो है ना बेसिकली डिल्डोज एंड वो है ना. हाँ रुक नहीं एक सेकंड रुक. ये क्या था? You feel good. Sensations. Hey guys, we're Nishka and Sahil, husband and wife, partners in crime, and the co-founders of My News. Partners in crime. I am from South Bombay. तू तो मत ही बोल. ठीक है रुक. My- किधर है? पॉज किधर है? पॉज किधर है? I'm तू from, तो I'm from South Bombay. I studied from NYU. And then came back to and then came back to spread sexual positivity in your lives or whatever in तू a तो मत ही society बोल. that is not very open about sexual things. तू तो मत ही बोल. तू तो मत ही बोल. तू साउथ दिल्ली का 14 साला. तू तो मत ही बोल. ठीक है. तू किधर पढ़ा है साले? हाँ तेरा एजुकेशन किधर है? हाँ तेरे को देखना. हाँ तेरे को मेरा एजुकेशन देखना है. जा गूगल पे सर्च कर. हाँ बर्मिंघम नहीं होप हॉल फाउंडेशन स्कूल. लिख होप हॉल फाउंडेशन स्कूल. हाँ पिटजी साले. तो हाँ, मेरा होप दिखेगा. स्कूल कर ले. मेरा दिखेगा. होप फाउंडेशन स्कूल. होप फाउंडेशन स्कूल सर्च तो कर. फोटो तो देख फिर पता चलेगा. रुक देखने दे. साले कितना बड़ा है भोसड़ी के. क्या मजाक कर रहा है? बड़ा भोसड़ी.
हाँ, बस्ती के अंदर है हमारा स्कूल, बड़ा बोल रहा है चूतिया। है तो सही साले, इतना बड़ा है। बेंच और क्या चाहिए? कुछ नहीं है यो, ये क्या है? ये क्या चूतिए, है? ये क्या है? ये बस क्या है? यही है, ये क्या है? ये क्या बोल रहा है? ये क्या है? बस देखने में अच्छा लगता है बस, साले ये देख, कुछ नहीं है वो। तेरे को देखना ग्रीन वाले तुम हाई लोग स्कूल गए देख, भोसड़ी के। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? भाई, तू हाँ ये क्या है हाँ पता है, देख क्या है, कितना अच्छा है क्या? बेंचो, कितना अच्छा है भोसड़ी ये। के बच्चों, हाँ फुटबॉल जहाँ खेलते थे ना, वहां पे गायें आती थी घास चरने। ठीक है, मत बोल। तू गाय आने की बात कर रहा है, तू जो वहाँ पे स्टेयरकेस दिखा रहा था ना, वहाँ पे जब हम भाई कूदते थे ना तो वो नीचे ये जाके गिरता था। ये कब बन गया भाई? ये कहाँ से ग्रीन वाली हाई स्कूल है? ये यूएस में कोई? और ये यूएस में, वो फक। हाँ, मैं घबरा गया भैंचो, ऐसा कब से होने लग गया? ये होता था ग्रीन वाली हाई स्कूल में। हाँ, क्या था? हाँ, इनका इनका देखते हैं। Self-care and new sensations. To put it simply, we create products that help you feel good, whether you're riding solo or exploring with a partner. So, how can we help you today? भाई पालवे, सेक्स टॉयज है नहीं, और क्या है? हाँ, क्या लेना चाहिए? 8,000 वाइब्रेटिंग रुपए स्ट्रोकर, वही। हाँ पल्स मसाजर, भाई कितना पैसा, वही, मैं वही सोच रहा। फालतू का पैसा। एक्चुअली रुक 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 रुक, एक सेकंड, इनकॉग्निटो को जाने दे। Fuck you। ये क्या है? ये क्या हो गया? कंट्रोल, ओह कंट्रोल शिफ्ट भी है ना प्राइवेट। हाँ हाँ। कितने का आता? कितने का एवरेज? एवरेज प्राइस कितना है? तेरे को दिख रहा है क्या? तेरे को सिर्फ विंडो दिख रहा है या तेरे को पूरा दिख रहा है? बस छोटा सा दिख रहा है, पता नहीं तू क्या कर रहा है। अच्छा 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 अच्छा, तेरे को वो नहीं दिख रहा ना, शिट। हाँ, ये देख रहा था मैं। दिख रहा है अब? देखते हैं। साला मेरे को लिख के क्या पछड़ी वाला। हाँ, भाई 700 का आता है भाई, कितना कितना पैसा ले रहे ज्यादा। देख रहा है? स्नैपडील पे ये सब भी मिलता है? स्नैपडील चालू भी है भाई? 3,600। ब्रो फ्लैशलाइट क्या है वो? फ्लैशलाइट है वो, Flashlight बोल रहा हूँ। फ्लैशलाइट है। इससे ज्यादा जोर से नहीं बोलना चाहिए। माँ कसम, अगर मम्मी घुस गई ना, इससे अच्छा तो मैं वैलोरेंट खेल रहा होता। अल्ट टैब दबा के रखना पड़ेगा। भाई चल वैलोरेंट ही खेल लेते हैं। अरे हाँ चल, वैलोरेंट खेलते हैं, अब बच्चों की करते हैं। आ जा, रुक एक सेकेंड। ये क्या आया? आ रहा है तू? Why not? आजा फिर। पर उसने रिकमेंडेशन दिया नहीं ना एरोटिका का? दिया तो, वही तो तूने ध्यान से सुना नहीं। Like that was a very well made video, but like भाई that it was an ये interesting कौन सा फिल्म है? ये मेरे को फिल्म का नाम सुनाई नहीं दिया। well, it was a bloody brand. It was a brand हाँ, ब्रांड डील है वो तो समझ आ गया। endorsement. That was a brand deal.
And then भाई कितने not only was it क्लेवरली इन very लोगों ने ब्रांड डील किया, वो भी subtle एक branding. सेक्स टॉय के साथ. Exactly, that script was also very nice. हाँ वो तो है, वो तो मानना Like पड़ेगा. they were a न्यूबी bit कौन है, तू cringe है about क्या? it, but fine. Yeah, of course. Nice. It screams like upper middle class, like upper class posh, like ऐसे डिस्कशन होते होंगे उनके, ऐसे मतलब समझ रहा है ना? साउथ दिल्ली, साउथ साउथ No, बॉम्बे वाले लोग लोग जब मिल जाते हैं ना, ऐसे डिस्कशन करते हैं, ऐसे दिमाग में चल रहा है मेरे. but like मैं सीरियसली जितना भी ओपन हो जो मैं, आई डोंट थिंक आई कैन बी दैट ओपन कि मैं ये सब डिस्कस करूं कि आई बॉट समवन अ फ्लैशलाइट एंड आई एम डिस्कसिंग अबाउट दैट. कुछ भी कर सकता हूँ, तेरी मर्जी. इस ये अकाउंट पे तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता. ये अकाउंट पे फर्क नहीं पड़ता. हाँ चल हम दो. तू साले यूके में है, तेरा पिंग मेरे से अच्छा कैसे है? ये क्या बकचोदी है यार ये स्ट्रीम की. अच्छा मैं 2 जगह स्ट्रीम कर रहा हूँ इसलिए. नहीं इधर तो मैं स्ट्रीम कर ही नहीं रहा. तो 2 जगह अच्छा हाँ. डिस्कॉर्ड पे तो स्ट्रीम नहीं कर रहा हूँ, नहीं कर रहा. एरोटिका रुक एक सेकंड. डिस्प्ले कैप्चर ऑफ करते हैं. हाँ क्या ले चैट. हाँ चैट. हाँ यो ओ स्प्लिट कॉम्पी. मैं पालवे सिलेक्ट कर. I'll fight anybody. I'll fight everybody. Any chance they'll let us through? Reload. Fine, we'll do it the hard way. I'm out of here. अरे अब पिंग ठीक हो गया. साला अब भी फ्लक्चुएट कर रहा है. Spikes here. Reloading. 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 Enemy B.
player standing. Where shall we go, Riftwalker? They भाई cannot watch everywhere at once. इतना कंगाल किधर है ये लोग? Reloading. वॉइस चैट पे क्या? I'll take down their Viper. वॉल जाने दे, वॉल जाने। कुछ खरीदा भी नहीं। ब्लाइंड 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 वेट वेट ब्लाइंड। ओह ब्लाइंड दे ब्रो, ब्लाइंड नहीं है। One enemy remaining. एक ही बंदा है। Last player standing. नाइस नाइस। जब बाय ब्लाइंड एंट्री के वक्त यूज कर दिया था ब्रो। हाँ मैं शहीद हो गया। भाई प्रॉब्लम भी चल रहा है या फिर अरे चेंज क्या हुआ है इस मैप में? मैं बहुत दिनों के बाद खेल रहा हूँ, सॉरी। you have the spike. Reloading. You don't want this. कोई चेंज है इस मैप में पहले से? हाँ मिट जाता है। हाँ हुआ है। फक हो गया। हुआ। X 130 मेरे से आ जाओ ब्रो। मरा ना वो। नाइस। से जिसको हिल कर दे। पीछे जा किधर जा रहा है? किधर क्यों जा रहा है? ए जा। तीन जगह एक मिनट। ब्रो ऐसे क्यों खेल रहे हो? वुमन भी है और वो सारे भी है। go planted. भाई अगर तू मर गया ना ये राउंड मारे। ब्रो बीजा वो अकेला है भाई। मैं इधर एंगेज कर रहा हूँ। वो अकेला है भाई। तीनों एक साथ पुश करेंगे तो ये मर जाएगा। एक तो ये है। ओ भाई गया। अबे चूतिया लोग अभी भी नहीं गए। क्या चमन है ये? Running low. One enemy remaining. Oh, my ult's ready. नाइस। भागो। भाई ये बच्चा अबे हाफ डिफ्यूज है वो। हाफ डिफ्यूज भाई वो बैठ जाता ना तो वो हो जाता। भाई क्या चमन है। फैंटम ड्रॉप करना। मैं फिर भाई इसमें भी वो है बेंचो। क्या? हाँ है ना ये। I need a drop. और उस दूसरे पे भी है ना ये सेम स्किन नहीं है। नहीं एज इन वैंडल पे क्या है? वैंडल पे कुछ नहीं सिर्फ ऑप पे। Sage rev me. My ult's ready. पीछे कहाँ? ए जा। Reloading. 78 रे। Reloading. अरे वो वहीं पे है। इसने बॉटम लेफ्ट नहीं चेक किया रीना ने। मोटू तू मर गया? नहीं यहीं पे। Spike planted. Time to jump.
कट करे। Last player standing. भाई रन एंड गन यार, ये ऐसे क्यों करते हैं यार, चूतिया बहन। ओह अबे यार मालूम पड़ गया। Team Ace. ये चलो भी। Their omen may be a nightmare, but I was never scared of the dark. मोटू फिर से दे। ये I need a drop. भाई यार किधर कहाँ है है तू? अरे भोसड़ी। ले लो टॉप करेगा। ये बोला ना। हाँ यूरो बाय दे प्लीज, यूरो आजा। यूरो बाय दे फास्ट। पैसा नहीं है भाई, पैसा नहीं है, कैसे भाई दूसरे। अरे वॉक करते हैं मिड पे, आजा। अबे बैंड का लोड़ा कैंपर ही मादर चोद। वॉक कर। चूतिया सुनाई नहीं दे रहा क्या तेरे को? हाँ कर रहा हूँ। भाई फ्लैश है। अरे वेट यार ये क्या भोसड़ी, वॉक करने का मतलब समझ नहीं आता तेरे को। सेज रिवाइव मी, मैं भाई रुक जा। उधर ऊपर क्रॉस रख। आजा। नहीं है, सब है। पता है मेरे को। भाई फाइट क्यों लिया आप? पीछे से ही आएगा ओमन। Portal closed. हेवन तू कहाँ है? ओ ये नीचे आया। नाइस। One enemy remaining. ओमन तेरे पीछे। Last player standing. 70 रे, हट। छुप जा। लगी है उसको थोड़ी। क्यों फाइट लिया? यूरो भाई फाइट क्यों लिया यार? तो लगा लेफ्ट से आएगी। बस फाइट क्यों लिया? कैसे? मेरे को लगा लेफ्ट से आएगी। प्लांट वगैरह किया था। I'll pick them apart. You clean up. साले हवा में कैसे उसने हेडशॉट दिया बे कूदते हुए? पता नहीं भाई, तुक्का लग जाओ क्या? तेरे पास वैंडल की कोई स्किन नहीं है ना? नॉर्मल वैंडल। अच्छा वो रिक्वेस्ट क्या रिक्वेस्ट करूं? I need a drop. हाँ Try not आजा to मिड से आवा। तू वहाँ जा रहा है। कोई मिड है ही नहीं। ब्रो कवर कर वॉल कर। पीछे आ नियॉन, पीछे आ। कहाँ देख रहा था तू बेंचो तू? अरे ले मैं वहाँ पे अल्ट कर दे। ओके वहाँ पे। कहाँ पे बेंचो? सोर्स क्यों देखेगा तू? क्या पागल? नहीं मैं ये देख रहा था। ये मैं मेल रूम देख रहा था। पीछे हिल कहाँ जाना है बताओ। आराम से आगे आ, कर दो। किधर है? मेरे पास फ्लैशेस है। Time to jump. Gotta go. Shortcut. That's the spike. Prepare for help. मरता है बेंचो। Good job. Reloading. As much as this world hurts me, it's mine, and I will kill to defend it. मैं इनका ऑडियो गया हुआ है शायद से। मैं 2 बार इनके पीछे यूरो टीपी किया, कोई देखा ही नहीं। सीढ़ियों पर और मत करो, मैं जा रहा हूँ।
भाई नियॉन आगे क्यों जा रहा है आपके साथ? अरे यार ये बहन का लोड़ा कैंपिंग करते बैठा। भाई नियॉन आपके साथ आगे गया है। रेज 80 है, रेज 80 है। दोनों ऑन साइड है, हाँ दोनों ऑन वही है, साइड है। साइड पे है रेज। हाँ रेज आगे गया नाइस। स्टेयर्स। One enemy remaining. नाइस Last player स्क्रीन। standing. यस Spike लेफ्ट। down भाई ये A. सेज का चूतिया है भाई। ने वॉल किया। Don't stop fighting. क्यों You की भाई must तूने grow, वो? even if you're the only one. Reloading. Reloading. Gun here. Reloading. स्किन है क्या? स्किन देना भाई। Need a drop. Claw Thank through you. them. इधर होता है। Welcome to my world. यार तोड़ना नहीं। I got spike. Enemy spotted mid. Go, go, go. Gotta go. Enemy spotted mid. बे यार Spike down B. मेरे साथ। नाइस 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 नाइस। चेंज गन कर। Last spike player carrier is standing. dead. क्या मोटू साउंड? टॉप लेफ्ट है तेरे पीछे। आज करके ले जा स्पाइक। गन चेंज करना था बे। कोई बात नहीं, सेव कर। चूतिया है क्या तू? टॉप राइट था क्या मेरे? टॉप लेफ्ट मैंने तेरे को कॉल दिया, तूने ऊपर देखा भी और तू दौड़ के ऊपर जा रहा है। मेरे को समझ नहीं आया मेरे को क्या गन चेंज मतलब। करना था। सही बोल रहा है मुझे। भाई यार प्रॉब्लम है कि मम्मी आ गई थी रूम में यार। मैं ईयरफोन्स निकाल। ये चलो ये चलो। अब तेरे को गेम खेलना भी अलाउड नहीं है। तू अब तो 12 भी नहीं बज रहे भाई। Let's go. हाँ पर मैं कुछ किया भी नहीं है सुबह से। मेरे को कुछ कर दिया है भाई। मेरे पास कोई गन नहीं है। इससे जील नाइस। नाइस। यूरो प्लांट, यूरो प्लांट, यूरो प्लांट। Cutting through. यूरो प्लांट। One enemy remaining. Spike down A. Thrifty. Well, that was embarrassing. My burden friends. I'm out of here. Go, go, go. Reloading. 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 Cover going out. Cutting their vision. Time to jump. यूरो प्लांट। Six. Behind you. Heal me behind you. Heal me behind you. Heal me. Six. अरे I have healed him. I have healed भाई ये him. क्या यूजलेस सेज है बहनचोद। One enemy remaining. नाइस लास्ट नाइस पता नहीं नाइस। है। Okay, I have the spike. Sorry. हाँ टीपी कर रहे हैं भाई। 3 लोग ही हारने वाले हैं राउंड में।
तीनों लो। ऑन साइट है। अब पता नहीं मैं। We all Medium are का good. शायद। I have heal now. Wait. Hit me or neon. Wow. क्या blind हुआ है bro? Reloading. Reloading. Gotta go. I'm out of here. A or B. Go, go, go. Reloading. 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 Cutting their vision. Back soon. I'll handle this. कहाँ पे? अरे यार भाई फंस गया। Here. I'm back. Here. Plant the spike. Enemy spotted B. Reloading. Brimstone's dead. Reloading. Yeah, bro. I'm just seeing if anybody is. One enemy remaining. Last player standing. Shit. भाई तू प्लान क्यों नहीं किया बे? इधर ही है। अरे bro मैं A 30 seconds left. वहाँ पे सब मर गए मैं क्या करूँ? Okay bro. Okay. Long. Okay. तेरे हिसाब से कर। मेरे पास ऑफ है ना तो लॉन्ग पे किया होता तो इजी जाता। क्या तुक्का लगा है भाई इसका, माँ कसम। Last भाई round क्या in the तुक्का half. लगा है। Don't be cheap. Spend it all before ये सेज ने उसके सर पे नहीं, वो उसका सर सेज के क्रॉसर पे है। वो इसके एम पे आया है। हाँ एकदम। ये चलो। ऑपरेटर स्किन है क्या भाई? I'm out of here. Can someone get this? Thank you. भाई 3 ऑपरेटर हैं। चूतिया है जो इनको खेलना नहीं आता है। चलो कोई नहीं, हम भी रुक ऑपरेटर। जा बे मोटू, मैं कर रहा हूँ ड्रॉप। अरे रुक जा, साउंड मत कर। नहीं वॉल है, रुक जा। जाने दे वो। वाह भाई। नहीं वहाँ पे क्लोज। देख रहा हूँ तेरा बैक, तू जा। यार इधर कोने में छुपा है। लोल। अंदर वाइपर कोने में छुपा है। अरे नाइस शॉट ब्रो। वाइपर कोने में छुपा है। हाँ भाई। Anyone else? अरे यार भाई किलोड ने ब्लाइंड कर दिया। You're done. सेज एक को मार के मुझे ऑफ सेव One करना है। enemy remaining. नाइस। नॉक भाई। अरे तो भाई ऑफ चलाने देना। 2 ऑफ हो गए तो क्या हो गया? 10 ऑफ होते। अगर सही चल रही है तब तक कहाँ गिर गया? नीचे तेरे नीचे। हाँ उसको क्या बोलते हैं? तेरी स्किन है गए। हाँ किसको? Switching sides. Reloading. बी हेवन से ड्रॉप। हाँ They're just batteries. we haven't so problem. Oh ये जाना पड़ेगा। चलो। तेरी छुट्टियां बहुत जल्दी खत्म नहीं हो गई? 2 हफ्ते की छुट्टियां थी। छुट्टियां भी नहीं थी, फोर्टनाइट था। बस पैसे बर्बाद किए मैंने और कुछ नहीं किया। क्यों? घर आया, पैसे बर्बाद किए 2 हफ्ते के लिए, और क्या। पुश कर रहा है नहीं हो? हाँ
बिल्कुल पुश मत करना। Cutting through. Spike down B. हील मार दे भाई। अबे यार हट भाई, तू आया क्यों नहीं यार? हील 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 हील। ब्रो मेरे 3 एचपी थे भाई। अरे तू ब्लाइंड देता है यार, ब्लाइंड बाय मेरी करना गन था गिर तेरे को गई। फिर। मेरी गन एक ही बंदा एक close left है। 10 ब्लाइंड टोट। ब्रो मेरी गन गिर गई यार। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वेट कर तू। Oh shit. नेक्स्ट करना कोई आए तब। Spike planted. गया। Last player standing. यार मेरी गन गिर गई टाइम पर। अच्छा शॉट मारा रे वो। मैं हील के चक्कर में। The enemy only looks composed. थोड़ा और कम करना पड़ेगा। मार्शल कर रहा है। पुश मत कर इसीलिए। एक जन का 3 सेकंड का कूल डाउन है, कैसे हील करूं इसके बाद? Time to jump. Reloading. ओ भैंस की उन्होंने कम कर दिया। मैं जाता हूँ पे। ये क्लियर है। चलो चलो। नाइस। जैसे कुछ नाइस। ब्रो मैं ए आ गए, ए आ गए। भाई सेज क्या यूजलेस है भाई। One enemy remaining. सेज छोड़ भाई, नियॉन को देखा Spike मैं। planted. ब्रो 78 78। नाइस 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 नाइस। Thrifty. I need nothing to win. Time to stop back up. Time तू to ये jump. खेल रहा है। हाँ, मैं ए पे देख रहा हूँ। एक मार्शल शॉट लेके हाँ, वो मैं ये करूँगा। जाता हूँ। ये आ गया। भाई ए ऑल ए, सब ए पे। Go, go, go. Spike down A. There. रेना टीपी की ऊपर, टीपी ये सॉरी ओमन टीपी के ऊपर। I'm out of here. One enemy 40 remaining. 40 ब्रिम। Spike down A. Reloading. The nightmare is becoming real. क्या मारा है भाई भैया। वेंडर या फैंटम की अच्छी स्किन है कोई। बिना तेरी फैंटम दे दे। कौन सी फैंटम? फैंटम फैंटम हाँ। Cutting through. ठीक है। मिड पे कोई नहीं है क्या? मिड पे होगा। अरे ए मैं कहाँ चाहते पे? टीपी यूरो मार है रहा वहाँ पे। Here. फालतू में। 120 पे स्पेक्टर से साला। Spike's here. Spike down A. ओमन 120 उनके पास सेज भी नहीं है। इजी।
नाइस ओमन One enemy स्मोक कर दे, remaining. स्मोक कर दे, स्मोक कर दे। कहाँ है ओमन? ओह वे ओमन टीपी करेगा, ओमन टीपी करेगा, उस पे अल्ट है, वो टीपी करेगा। दोनों साइड्स पे जाओ। साथ में रहो ब्रो, साथ में रहो प्लीज। हेलो हेलो हेलो, साथ में रहो, साथ में पिक करो बस। हाँ देख वो आया, देख। ब्रो क्यों जाने? There. 30 D. seconds left. Spike planted. My ult's ready. ब्रो क्यों फ्री में 1v1 देते हो यार उन्हें? जीत गए कोई। I've tried to slam out of here. There. दो ऑप्शॉट्स मैच होने के बाद क्या हुआ? हाँ मेरे पास पैसा नहीं है। I need a drop. क्या पैसा चाहिए तेरे को? ओ ऑपरेटर। हट हट। I need a drop. दे पैसा दे। Thanks. मैं कब से ऑफ के लिए बता रहा हूँ, बहन चोद, मेरे को चांस नहीं मिल रहा। अच्छा तू दे ना, ऑफ दे। न्यून आ रहा है क्या? मैं किल करके वापस आ सकता हूँ उसके लिए। मेरे पास स्किन था। हट 108 दिया, शिट। रेना ये थी सिर्फ, देखिए। ओमन मिड पे सब है। नाइस। Stealing sight. हेवन गई, हेवन नो, गई। नो। रेस हेवन है। नहीं यार आओ। ओह नाइस। One रेस enemy हेवन। remaining. Spike down A. अरे स्टेयर्स, Last स्टेयर्स, player standing. स्टेयर्स, स्टेयर्स। लेफ्ट में तेरे। स्मोक कर दो हेवन और स्टेयर्स। Shadows traveling. वो भी स्मोक कर दे। मेन तो तेरी वजह से मैं भाई तब भी तेरे 11 किल है, कितना डरता है तू ड्यूलिस्ट हो गए। 30 seconds left. एंटी ओवन एंटी। अबे तू मेन स्मोक कर देता, फिर स्क्रीन चला जाता। क्या करता मैं स्क्रीन से जाके? स्क्रीन से आके तेरे को मालूम है हेवन से वो नहीं आएगा, कूदेगा नहीं। पता नहीं था हमारा। क्यों मेरे को कैसे पता है? स्टेयर्स पे है ना, स्टेयर्स से वो दो ही जगह जा सकते हैं, या फिर तो हेवन से आएगा यार तुम्हारी या फिर स्टेयर्स तो पे कहाँ है भाई वो? स्टेयर्स पे मरा था ना वो, लास्ट यहाँ पे मरा था। यहाँ था ना वो? हाँ वो स्टेयर्स ही तो है। तो यहाँ से हेवन नहीं जा सकता था? हाँ हेवन इसलिए तो स्मोक करवाया तुझसे। तो तूने पर बोला कि तूने मेन स्मोक करना चाहिए था मेरे को। हाँ मेन भी स्मोक करता है, हेवन भी स्मोक करता है। अरे फक, यहाँ पे मेरे पे कोई गन नहीं है। डोंट टिक डाउन। हाथ में राउंड डाल दो। रुक रुक मैं तोड़ता है। जा जा जा। मिड पे वाइपर मिड। Last player standing. अरे भाई स्टन होने के बाद मार दिया यार। मेरा ड्रैग नहीं हो रहा यार, क्या चूतिया आप है। Preparing to go. We fight 1 second. Reloading. नेक्स्ट इकोनॉमी की मार चुकी पड़ी है यार। रुक रुक ऑफ मत कर। नेक्स्ट अरे राउंड बाय मत कर अभी। ठीक है सस्ता बाय कर। रुक मैं वहाँ पे करता हूँ, तू यहाँ से कर, नीचे से कर। नीचे से? अच्छा मतलब उतना पास से कर, ऑन साइड से कर। नहीं है भी है। वापस आ। क्यों नहीं ऑन आगे जा रहा है? ओ भाई जा जा 126 रहना हील हो रहा है, जाओ जाओ जल्दी जाओ, हील मत होने दो रे।
और अगले राउंड में पुश नहीं करेंगे। ए जा रहे हैं। मैंने वैसे हाँ मोटू ए जा रहे हैं वो। नाइस शॉट योरू सेज वेंडल सेज और ब्ले प्लीज सेज और ब्ले तेज और लेके मेरे को रेव करना है यार जल्दी से नियॉन को कर दे हाँ हाँ योरू की मास्टर किधर है वो मैं चलाऊंगा Planted. आ 101 अरे। बेंचूद। एक ही ऑन साइट है मोटू। कहाँ रेज ऑन पर साइट है बस। कहाँ हाँ पर बस ऑन ठीक है साइट है क्लियर कर ले बस। हाँ अभी क्या हो रहा है ये क्या हुआ मेरे साथ योरू तू जाके डिफ्यूज कर वो बहुत दूर है। क्या हुआ मेरे क्या साथ एक्टिव में राउंड मत आ रहा है। भाई ये क्या हुआ मेरे साथ हुआ क्या मेरे को समझ में नहीं आया। मेरे पैकेट लॉस इतना हुआ जाओ 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 नाइस नाइस Didn't come here to die. नहीं होगा वे थोड़ा दिमाग यूज कर Player standing. Clutch. तेरे तूने इतना भाई टाइम क्यों मारा वेस्ट कितना किया sexy ए है साइड उस क्लियर रेज को। करने के बाद। भाई क्लियर नहीं मैं ई दबा रहा हूँ मेरा को स्क्रीन फ्रीज है पैकेट लॉस मैं वेंडल स्क्रीन देना यार वेंडल कर ऑफ कर तू ए ऑफ चेज वेंडल पीछे से ऑफ कर साइड से वहां से मत कर। Reloading. साइड से कर क्या। हाँ और कॉल देना हाँ मरना मत वहां पे। नहीं है ए नहीं है ए नहीं ए हो सकते हैं। ए पे है स्मोक किया उसने हेवन टीपी मारो बी आओ रे बी आओ जल्दी यस यस आ रहा है फेंक था, 2 फेंक मिनट था। मुझे ओमन के बैंगल ले भाई जल्दी आ जाओ जल्दी बहुत जल्दी Bad luck. Dead. अरे एक नंबर यार One enemy remaining. Spike down B. Time to jump. कहाँ मारा तूने इतनी दो को। अच्छा वहाँ नीचे में नहीं भैंस 2 बार रिपीट किया उन्होंने कहाँ है ये। Reloading. मालूम नहीं भाई क्या हुआ ऑनेस्टली रेनो ने जितना बका है ना उतना उसने एक्शन से नहीं दिखा रहा Time to jump. ए Cutting through. 105 वाइपर 105 रिलोड करके डिसमिस हो अल्ट कर देना यार है ना अच्छा करिए हाँ हाँ तो फिर डिसमिस हो गए मारना उनको भाई जाके तू पीछे क्यों बैठा है फिर इनको मार डिसमिस हो बार बार करिए काम अरे यार सीख जाएगा भाई धीरे धीरे कोई दिक्कत नहीं है तू करता रहा अगर ऐसे 105 था ये वाइपर हाँ देखा उसका किल आया ना ऐसे जीतते हैं भाई ए ले गया उस पैक ले गया ये पे बी पे ले गया वो साथ में रहो भाई प्लीज हेलो अरे साथ की जरूरत ही नहीं भाई एक ही तो है वो कितनों को अकेले मारेगा बढ़िया खेल रहा है अपने हम यूरो दोनों तेज भी बढ़िया खेल रहा है Spike planted. चूती तो डिफ्यूज करो मन कहीं भी कर देता है भाई तू मेरे को फ्लैश कर दिया था यूरो ऑपरेटर देना भाई यार ये फ्लैश कहाँ का था मेरे को समझ में ही नहीं आया भैंस की आँख यहाँ का साले रन एंड गन कैसे वहाँ का हुआ भैंसो यूरो क्या बोलते हैं वहाँ पे तो स्मोक था
स्मोक तेरा था, तू स्मोक के अंदर से बाहर गया। अरे किसके पास है स्किन देना? हाँ। सेज इधर आ, ऑपरेटिव स्किन दे। हाँ तो तेरा स्मोक था ना। कोई ड्रॉप देना। अरे इसको इसलिए बाय दे दो, सेज को बाय दे दो कोई। तू स्मोक से निकलता और वो फ्लैश्ड होता, इसलिए मैंने जरूर। फ्लैश किया। बी होगा। मैं करूँ स्मोक क्या नहीं करूँ तेरे लिए? हाँ मत करना और तू। कर। Time to jump. नहीं है कोई भी तो ये वॉक में लेट भी आएंगे। ए पे नहीं फक भी हो सकता है यार। मिड है, मिड ए पे अग्रेसिव। वाइपर। ए पे ए पे ए पे ए पे। ले लेगा ना उसकी सेज। अरे भाई ये ये है। तो एरिस क्या लेके? यार ये एरीज है इसके पास। वो हेड लगा। Spike planted. Go, go, go. Elf ready. I'm out of here. Back soon. अरे वेंचर स्क्रीन्स में स्टन करके डिफ्यूज कर। स्टन पता नहीं क्या है। बॉम्ब फेंकेगा वो। चूतिए कहाँ गया तू? इसको बचाना चाहिए था हेवन ना। हेवन हेवन था। Defenders win. Call me when the world ends. नाइस। Last player standing. पता नहीं तू कैसे हेवन चला गया वेंचर। अरे मैंने टीपी रखा था ना हेवन का, इसीलिए तो हेवन गया। पर तेरे को कैसे पता वो हेवन होगा? क्योंकि साइड क्लियर था, स्क्रीन क्लियर था, बाकी बचा हेवन। स्टेयर से तो मैं आया। लॉल। खेल रहे एक और? अभी ब्रॉन्ज क्यों खेला? खेल रहे हैं? चल तेरा एक और ही चाहिए प्लेसमेंट के लिए आज। खेल रहे कि नहीं? हाँ हाँ अच्छा तू हाँ बोला, बोल तो मैं सुना ही नहीं था। हाँ तूने बोला ही नहीं। हाँ बोला मैं। हाँ तू बात कर रहा था कि एक और चाहिए प्लेसमेंट। Match found. क्या खेल रहे? कौन सा वहाँ पे? आइस बॉक्स। सेज ले सकता है। तू क्या खेल रहा है? ओके जे। तेरे को खेलना आता है कीजे? नहीं तो मत ले ना। क्या खेलना आता है तेरे को? जेट ले जेट ले ले। Let's go. सेज ले। मेरे पास एक्चुअली अनलॉक नहीं तो मैं ये खेल लेता, क्या बोलते हैं इस मैप पे। चेंबर बहुत सही है एक्चुअली। मेरे को नहीं मालूम नर्फ के बाद चेंबर कैसा है। भाई गोल्ड लॉबी आ गई यार, तो गोल्ड खुलने वाला है शायद से। I wonder what torture their omen is going through. Is it like ours?
Nice. Oh! Spike down A. ये यहाँ पे दो है. Enemies A. Spike down A. One enemy remaining. Oh, nice. एक भी नहीं मार पाया मैं. Pena. Sweet, that went well. All right, same thing this time. One down. Multiple enemies A. Reloading. अरे यार मेरा पिन स्पाइक. Colorful kill. One enemy remaining. Nice. Reloading. Last one on site. Okay. Okay. That Raze has some good inventories. Would love to pick them apart. हाँ 101 पड़ा दो मत यार शॉपिंग के पास. रेस 101 है. Spike planted. There. One enemy remaining. बैक. अबे राफ्टर्स है क्या देख रहा है वो. ओ भाई. भाई कॉल दिया मैं राफ्टर्स. अच्छा उनको सुनाई नहीं दे रहा. तूने शिट. देखा नहीं लोग ये कैसे खेल रहे हैं. नहीं उनका मेरा कॉल नहीं जा रहा ना. ये रेना किधर देख रहा था. मैं राफ्टर्स को मैं वही सोच रहा था रेना किधर देख रहा. मैं तो राफ्टर्स कॉल दिया फिर पता चला हाँ सुन नहीं पा रहा. भाई रेना चूतिया है भाई. रेना को खेलना नहीं आता. तूने देखा नहीं. ना मैं रेना को नहीं कर रहा था. मैं इसको देख रहा था. Shadows traveling. Spike down. Attacker spawn. की तरफ खेल रहा हूँ. One enemy remaining. नाइस. अबे वो स्पाइक पे अल्ट करेगा. वो स्पाइक पे अल्ट करेगा. सकार पालवे वो स्पाइक पे अल्ट करेगा. बी जा. बी साइड जा. वो स्पाइक पे अल्ट करेगा. ओ दिख गया. वो क्या चूतिया बन रहा है.
आराम से कोई साइड पकड़ के हाइड कर सकता। Their life, not yours. I will find you, Omen. Cover going out. Spike down B. हेलो यार, Enemy मैं चूतियों की तरह खेल रहा हूँ।